Assalamu alaikum. It's bright sunshine. It's a new day. Match number 7 of JK Super Cement, a Red Premier League presented by Athwas. We got two teams in the middle. It's Global Dadoo Titans taking on Hillview Rajouri. It's Umar Malik and Sarshi Labas, the two openers for Global Dadoo Titans. And looking at their combination, they have some of the big names in the lineup. One such big name, and their pace battery spearheaded by Mahjoor Ali Sofi and Dardish, and he's got Gawar Rashid, the other pacer in the lineup. And look at the two openers. It's Umar Malik and Sarshi Labas. And talking about the temperature today, it's 30 degrees Celsius, Nazir. 30 degrees centigrade, that too in September. It's 15th of September, and it's 30 degree centigrade straight away here at Bakshi Stadium. Lovely scenes, beautiful pictures. It's going to be Rajat Sharma to open the attack. There is a slip in place. The two openers, Umar and Sarshil, for Global Dadoo Titans. It's game time. Let's play. And he cuts that one. Cuts hard into the backward point boundary for 4. What a start here. Straight away he's up the mark, up and running. He opened his account with a beautiful scare cut. Take a look again. Wonderful shot. So nice up the bat of Sarshi Labas as he opened his account with a blistering 4. And with that boundary, they're underway. They are off the mark. And Rajat, there was nothing wrong with the ball. It was still a good ball. But look at the execution. Look at the execution from batter, the way he planted himself, the way he adjusted against that one and keeping it away to backward a point for 4. They're up the mark, they're underway. Global Dadoo Titans are full finale in over number 1. Rajat again. Soft hand. Call is for single. Called his partner, he responded. There's a good response. There is a positive feedback from other side. A single to get 5 without loss. And I would love to welcome my colleague in the com box, Nazir. अस्सलामु अलैकुम, धन्यवाद मनवर, स्वागत आप सभी श्रोताओं का। ग्लोबल डैडू टाइटंस वर्सेस हिलव्यू राजौरी, पहला मुकाबला ग्लोबल डैडू टाइटंस का और दूसरा मुकाबला हिलव्यू राजौरी का। कुल मिलाकर 7वां मुकाबला। 5 बगैर नुकसान के उमर मलिक और सरशील ने शुरुआत की है बल्लेबाजी में। रजत शर्मा ने शुरुआत की है गेंदबाजी में। और एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता प्रारंभ में इन दो बल्लेबाजों को। खूबसूरत और शानदार वातावरण, आकर्षक वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल और अच्छा खासा तापमान, करीब करीब 30 डिग्री के आसपास। और ऐसे में ये 7वां मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास 2025 वर्ष, दूसरा एडिशन। प्लेइंग 11 की बात करें, ग्लोबल डैडू टाइटंस उमर मलिक, अबू तालिब, आमिर अजीज, अथर्वा काले, दर्दिश गोनी, गौवर रशीद, इम्तियाज लेफ्टी, कुनाल थ्रॉट, महजूर अली सोफी, सरशील अब्बास और वसीम राजा। रजत की बात करें, बहुत बेहतर गेंदबाजी पिछले मुकाबले में उन्होंने की थी। वो किफायतीपन जरूर दिखाया था, वो अनुशासन दिखा था और उसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता। हालांकि पिछला मुकाबला हिलव्यू राजौरी जरूर हारी थी, पर यहाँ जीत की तलाश हो गई इस मुकाबले में हिलव्यू राजौरी को। इस बार हवा में उड़ाया गेंद को और कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ यहां पर ग्लोबल डैडू टाइटंस के बल्लेबाज को। रजत शर्मा के विरुद्ध स्ट्रोक, आत्मविश्वास बढ़ेगा यहां पर बल्लेबाज का। खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाला था, 4 रन जीत किए। और हिलव्यू राजौरी वही टीम जो पिछले मुकाबले में खेली थी, एक बार फिर उसे उतारा है इस मुकाबले में। पुनीत कुमार, अंकुश बंद्राल, अनुज कुमार, गौरव चौधरी, पारस शर्मा, पवन निर्वाणी, रजित शर्मा, रामदयाल, रोहन कोल, सूर्यांश रैना और उमर लेफ्टी। तो ये है प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। लेकिन इसमें अगर देखा जाए इस विकेट पे, हालांकि पिछले मुकाबलों में हमने देखे कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली और कुल मिलाकर एक अच्छा विकेट पिछले कुछ मुकाबलों से, क्योंकि 209 रन भी इस विकेट पे बने, 199, 184।
तो जैसे जैसे ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती चली जा रही है और विकेट भी हमने बहुत बेहतर देखा। फिलहाल एक ओवर की गेंदबाजी के बाद हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब के विरुद्ध ग्लोबल डाडू टाइटंस 10, सरशील 9, उमर मलिक 1। Second over is about to start. It's going to be Gaurav Chaudhary. Spin from both ends. Captain is happy to continue with spin from both ends because spinners are very effective here. And Rajat was little expensive straight away. But yesterday, the way he bowled, that was awesome with the ball. Gaurav Chaudhary has got the economy of 6.54. Picked up 175 wickets. Good shot there. And he's in his 165th game. He has played 164 prior to this. And best of 4 for 20. The economy telling us the story. He has got the economy of 6.25. So he's going to concede runs. You don't need to overhit the ball. You can build it one by one, step by step. And Umar Lefty has crossed the mark of 8k runs. And he's 15 runs away from completing that milestone of 8k in today's game. He's just 15 away. And some other things are going to happen in today's game. We're expecting that. And Imtiaz Lefty need 1 wicket to make it to the 900 wickets in limited over cricket in shorter format as far as the local cricket is concerned. He's 1 wicket away and Umar is 15 runs away. And are they going to get to the milestone in today's game? Let's find it out. Thank you, Nazir, for letting me know that these are the status. These are going to be the highlights. We have to look forward to these things. And Rohan Cole need 4. He need... well, later on we're going to talk about it. Number of 6s and 4s. Well, that's aerial, that's uppish. But that's gone over the point. It's gone over scale to be precise. It was the right-hander Sarshil Abbas on strike. And take a look again. That's gone for a mighty 6. Gaurav is bowling around the wicket. Oh, it was in the zone. It was in the radar. He goes for that a big sweep and mighty hit. It flies all the way. There is no one. But it's gone almost 5 or 6 rows back. The next one could only block it back to the ball on 19 without loss. As we are in second over of inning number 1. They're going at the rate of 10.36. Little aerial again. He's happy to content with 1. With that single, it's 20 for none after 2 overs. Well, a good start to me. At a brisk pace, at a good pace, they are 20. They're going 10 and over at the moment. Good start. Need to carry on. As it's a 20 over game, 18 overs are going to come after this. So they have 18 overs. That means 108 balls remaining with all the 10 wickets in kitty. On the other side, there is Puneet Kumar and others having a chat. Now they're just trying to encourage the boys in their unit that, yeah, we lost the yesterday game, but today it's a different day. We can bounce back and we have to find a way. We have to find a win here. And if we manage to win, we are going to be in the event, in the contest. And if we lose, then it's going to be tough to find our place in the event. We can't say that it's all over, but it's going to get tough. And it's going to be an uphill task to keep themselves alive in the race of qualification when it comes to the qualification scenario. And you have to qualify, you have to win at least, to qualify you have to win at least 3 games at least. Talking about the event, it's a league-based tournament and the net run rate is another concern. That's going to come into play. Look at their dugout. This is the Global Dadoo Titans dugout. After 220 without loss, Umar contributed just 3 and Sarshil has batted for the majority of time. He has scored 17 of just 9 balls. Rajat to continue and captain is happy to persist with Rajat, the man who picked up 2 wickets yesterday. And today Rajat is trying to use that pace behind the ball. He's going little quick at the moment. And this surface is dried up today. It looks good for batting. And that was early one from batter, I think. It was needless from Sarshil Abbas. He's caught by bowler. It's caught and bowled. First one is down here for Global Dadoo Titans. He was eyeing another big shot here. He wanted to go over the long on. But this time, look, his bat rolled a little bit in his hand. Leading edge. It flies in air.
straight went up in air, and Rajat does well, settling underneath the ball. I think it paid off in the end. First over that gone for runs, but the second over he removed Sarshil Abbas. पहला विकेट। हालांकि स्टोक इस प्रकार से खेलने की आवश्यकता भी थी नहीं, पर योजनाबद्ध तरीके से ललचाया बल्लेबाज को, और बल्ला घूमा जरूर हाथ में, और ऐसे में विकेट मिलता हुआ 20 पे पहला विकेट 2.2 ओवर की गेंदबाजी में। ग्लोबल डडू टाइटंस जो कि अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास 2025 सेकंड एडिशन, ये उनका पहला मुकाबला है, और हिलव्यू राजौरी का दूसरा मुकाबला, और पहले मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, पर ग्लोबल डडू टाइटंस की टीम चाहेगी शुरुआत जीत के साथ हो, और 20 पे 1 यह हफ्ता का लेखा जोखा। तीसरा ओवर, इम्तियाज लेफ्टी नए बल्लेबाज नंबर 3 पे। लेफ्टी की अगर बात करें, एक लंबा अनुभव उनके पास, अगर उनके क्रिकेट कैरियर की बात करें तो कई कीमती मान उनके पास है। अनुभव की कमी नहीं है, पर उस अनुभव को आज दर्शाना होगा। यहाँ ग्लोबल डडू टाइटंस की ओर से खेलने का अवसर मिला है इस जेके सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास 2025 सेकंड एडिशन में। एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक दिग्गज ऑलराउंडर हैं बडगाम क्षेत्र से। इस बार सम्मान दिया, ऑफ स्टंप पर नीची गेंद थी, सीधे ऑफ साइड में गेंद को निकाला, पीछे फील्डर, थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखाना होगा। कमाल के विजुअल्स, 7वां मुकाबला, और तापमान अच्छा खासा 30 डिग्री तापमान। वाइड का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रन की सहायता के साथ रन संख्या 21, 1 विकेट के नुकसान पे 2.4। इम्तियाज लेफ्टी उमर मलिक, हालांकि सरशील अब्बास ने शुरुआत की थी उमर के साथ, वो ज्यादा कुछ योगदान दे नहीं पाए। वो बेहतर गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, तेज गेंद का इस्तेमाल यहां पर किया था। रजत बहुत ही बेहतरीन और चतुर गेंदबाज। जहां तक सवाल है हिलव्यू राजौरी का, 1.5 ओवर में 11 रन उन्हें खर्चे, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। बाएं हाथ के इम्तियाज लेफ्टी के लिए बाएं हाथ से, और ऑफ स्पिन गेंदबाज काफी प्रभावित रहे हैं, काफी प्रभाव छोड़ा है उन्होंने, वो खासकर जो लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज। अच्छे खासे विकेट उनके पाले में गए हैं। 3 के बाद 21 पे 1, इम्तियाज लेफ्टी 0, उमर मलिक 3। ग्लोबल डडू टाइटंस पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मुकाबले में हिलव्यू राजौरी के साथ। एक और मुकाबला आज के दिन, एक और कड़ा संघर्ष, अथवास इंडिया 11 वर्सेस सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। वो बड़ा मुकाबला, क्रिकेट का घमासान, बल्ले की गर्जन आज शाम देखने को जरूर मिलेगी। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब जेके स्पोर्ट्स टाइम और रेड एफएम जेके यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 21 पे 1, 3.1 के बाद गौरव चौधरी का दूसरा ओवर। खड़े खड़े बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन में थे नहीं, इस प्रकार के स्ट्रोक से बचना होगा। दूसरी गेंद पे भी रन आया नहीं है, थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करने। इक्का दुक्का दर्शक धीरे धीरे से सौदर्न पवेलियन एंड की ओर से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए। एक अच्छा मुकाबला इस समय चलता हुआ, 21 रन संख्या, और एक सिंगल मिल जाएगा यहां पर दोनों बल्लेबाजों को। चौथी गेंद पे जाकर के ये सिंगल। 22 पे 1, इम्तियाज लेफ्टी और उमर मलिक पे दायित्व। इम्तियाज ने 4 गेंदों का सामना किया, खाता खोलना बाकी। Lefty is finding it little hard at the moment. Yet to open his account. Garo in search of a wicket here. In search of a breakthrough. Tremendous atmosphere
It's 30 degrees Celsius. But that breeze is going to be important. Gentle breeze is around the corner. That's a beauty. Gets beaten Umar Malik there. It's 4 gone. 1 for 23. Nicely bowled. Surprised left-hander Umar Malik. The two left-handers in the middle. Garo bowled 2 overs, none for 12. And Rajat Sharma, he bowled other 2 overs. And he's gone for 12 and picked up a wicket in the form of Sarshil Abbas. Winning the toss, batting first, is a good call to make. Put runs on the board. And in the second innings, you can make a match out of it. You can defend that. But you need that courage and caliber. But first and foremost thing is to set a good target on the board. Try to finish it at 180, 190. That will make it a stiff competition between bat and ball. And who knows, it might become tough one to chase in the second innings. And with the flow, gone down to the backward of square fence for 4. On the bounce. And he unlocked himself there and directs it in a well direction. There wasn't anyone patrolling, and he knows that it's a safe zone to target. Little bit shuffle across. Then directed it nicely. 1 for 27. Smart cricket. But look at that one now. Reversing his stance. And fielder in pursuit. Will he get to the ball? Will he make it to the ball? Oh, just makes it to the ball. He does well there. Saved a couple of runs. The batter is trying to bat freely. He's trying to free his arms here. And this is what you need. Face the dead balls. And is now trying to find that form. And lefty is on to 7 of 7. He's batting with a strike rate of 100. Glorious again. Rock back. Lefty is of that caliber. He has that ability to stabilize. You're talking of the quality, it is so nice. The camera work is fine and excellent from our camera team. Thanks to the Ashish and his rest of the members and the rest of the team. It's a teamwork. Chipping in with the dot delivery, Rohan Cole. Now this is testing. This is going to test the batter. In the power play, going with the spinners, gone are the days when you use the pacer straight away. Nowadays, you're using spin from both ends. And the left arm pacer very effective, but he's a right arm spinner and off break bowler. And look at that delivery. Once again, ball is holding up. What is the reason? We have seen 7 of the game, 6 matches overall. This is 7th one underway. And look, ball is still holding up a bit, still little bit we can say. But it's a good, overall it's a better surface to bat on. Only thing you have to do is to apply yourself. First you look at 2-3 balls, where the ball is going, how it is coming. Then you have to look for 1s and 2s at least. When you look for 1s and 2s, that will relieve that pressure. Once the pressure is released and you feel that sigh of relief in the middle, you have that ability to go for the big and you can score runs. And on the other side, when you make the bowler toil hard, he has to work with another plan. He has to look for plan B or C. But that's going to only come into play when you try to bite that bullet. It is just like that. I'm going to bite the bullet, never going to give up. And that's what they require at the moment. If we talk of the score, it's steady start now. It was a terrific one after 2. And now it looks a steady one. And pull that one. Gonna be big chase.
Batamat as well, the local boy from Heart of Steel. A round of applause. The another important thing is that I have seen just one place where the crowd is loving everyone, be it the batting side, be it the bowling side. That's England. The audience is there. They praise everyone, whosoever is talented, whosoever score runs or bowl in the right direction. They praise everything. I mean to say that every run is being cheered, and every good ball is being praised. And that's the beauty and the maturity of the crowd. That's a good shot. Reversing his stance again, down to the backward point area. In the end, it deviated a bit down to the third man portion for a 4. And with that boundary, there is addition to the score. But just talking about that, these things will come into play. These things are going to happen, and you have to improvise in between. As this is just a T20 game. It's a 20-20 game. You only 20 overs to face. And inside 20 overs, you have to do everything. One is to keep your strike rate up to the mark, keeping wickets intact. And that one just short of man there. Would have been a good shot either side of the man, but it follows just short of fielder there. No problem at all. The last ball of power play. Eyeing a big sweep. Gets beaten. That marks the completion of power play. And power play is done and dusted. It's 36 Global Dadoo Titans at the cost of 1. They're scoring runner ball. They're going runner ball here. Not bad. But in between, this side need to up the tempo. On the other side, you have to give full credit to the batting side after leaking 20 in just 2 overs. The next 4 overs gone for just 16. So the economy of 4. And first 10 overs, we saw the economy of 10. They were going at the rate of 10 and over. In the next 4 overs, just 16 runs coming. It's a good comeback. They are putting brakes on and something to cheer for the bowlers. That means that there is a little improvement. अच्छा प्रदर्शन रहा. नेवर की शुरुआत काफी ऊपर, हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, और ये कैच छोटा. एक आसान सा कैच था ये. संतुलित हो गए थे वहां पर फील्डर, पर गेंद हाथ में आई नहीं, चिटकी, और एक जीवनदान मिलता वहां पर बल्लेबाज उमर मलिक को. रोहन कोल को यहां सफलता मिल सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं. और थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी यहां पर बल्लेबाजों को. बड़ा स्ट्रोक, हवा में खिलाड़ी उस, और वो प्रयास असफल, और गेंद सीमा पार. ये छक्का मिलता हुआ ग्लोबल डैडू टाइटंस को. थोड़ा आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करने का प्रयास इम्तियाज लेफ्टी और उमर मलिक का. के सरशील अब्बास शुरुआत में वो प्रयास जरूर था, पर गेंद काफी ऊपर थी, उनकी पहुंच से बाहर थी. 6 मिले इम्तियाज लेफ्टी को. 43. इस बार सामने की ओर सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ खेला. लॉन्ग ऑफ तैनात है, एक सिंगल मिल जाएगा. रोहन कोल की इस ओवर में अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों का. विकेट को परखना होगा बेहतर तरीके से. सिंगल डबल काफी महत्वपूर्ण है. ये देखिए, बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, पर गेंद की लाइन से थोड़ा दूर रह गए, और गेंद पड़ने के बाद हल्का सा उछाल था सीधे विकेट कीपर के पास, आक्रमण ऑफ स्टंप के आसपास. ये देखते हुए कि ऑफ साइड में एक अच्छा फील्ड घेराव रखा है, उसके अनुकूल गेंदबाजी होती. ऑन साइड में लेग बाय का इशारा संभव थे. जी हाँ, 1 रन और खाते में. 45 पे 6.5, 19 पे इम्तियाज लेफ्टी 14 गेंदों से. और इम्तियाज लेफ्टी जब से बल्लेबाजी के लिए आए हैं नंबर 3 पे, तब से उन्होंने इरादे स्पष्ट किए हैं. रनगति को उछाल देने का हर तरीके का उन्होंने प्रयोग किया है. यहाँ पर टर्न अच्छी थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती है गेंद. टर्न से चकमा दिया इम्तियाज लेफ्टी को, उस स्पॉट को थपथपाया जहां पे गेंद ने टर्न जरूर लिया था. विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के. 7 के बाद 45 पे 6.43. टाइटंस की अगर बात करें तो इस विकेट पे 170-180 जो पिछले 2-3 मुकाबलों से देखा गया है. हालांकि 209 बने, और दूसरी टीम ने वापस भी अगर हम जिक्र करें तो 170-175 तक पहुंची थी. फिर 184 के जवाब में टीम 160-165 तक पहुंची थी,
और 169 के जवाब में टीम 139 तक पहुंची थी। तो दूसरी पारी में नजदीक पहुंच करके लक्ष्य के हारी जरूर है, पर एक अतिरिक्त दबाव रहता है। आप शुरुआत में पहली पारी में एक टारगेट सेट करें, एक चुनौती दे दूसरी पारी में टीम को, अतिरिक्त दबाव रहेगा बड़े लक्ष्य का, साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर रहेगा। अगर पहली पारी में एक अच्छा टारगेट आप सेट करने में सक्षम हो जाते हैं तो कोशिश जरूर होगी टाइटंस की, ग्लोबल डाडू टाइटंस जो अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं इस प्रतियोगिता में। ये 7वां मुकाबला जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 second edition presented by Athwas. ग्लोबल डाडू टाइटंस 45 पे 1-7 के बाद हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध। नए ओवर की शुरुआत रोहन कोल ने 2 ओवर में 16 रन खर्चे। एक बार फिर ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सरकती हुई गेंद, खड़े खड़े अपनी जगह स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फुट मोमेंट था नहीं। इस बार कनेक्शन 2 खिलाड़ियों के बीच में से, गेंद पीछे, फील्डर सिंगल मिलेगा यहां पर। गौरव चौधरी आखिरी ओवर उनका, विकेट अभी तक उन्हें मिला नहीं है पर अनुशासन जरूर दिखाया। 3.2 में 18 रन मात्र खर्चे हैं, 46 पे 1। अच्छी गेंद, सम्मान दिया। इम्तियाज लेफ्टी 19 पे 15 के दूसरे, और इम्तियाज लेफ्टी और उनके साथ उमर मलिक एक अच्छी साझेदारी निभाते हुए, क्योंकि सरशील का विकेट गंवाने के बाद वो जो दायित्वान पहुंचा इन 2 बल्लेबाजों पर, वो उसको बेहतर तरीके से अब तक निभाया है। इम्तियाज लेफ्टी ठीक गेंद की लाइन के पीछे आकर के स्ट्रोक लेने का प्रयास, अंदरूनी भाग जरूर लगा। एक सिंगल मिलता हुआ 46 से बढ़कर 1 रन और तो 47। 8 पे सामने 18 गेंदें खेली हैं, उमर मलिक ने 8 रन बनाए हैं। थोड़ी धीमी शुरुआत जरूर, थोड़ा सा आक्रमण करना जरूर होगा। पिछले कुछ समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं पर गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आ नहीं रहे हैं, गेंद को मिडल कर नहीं रहे हैं। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई यहां उमर मलिक के लिए। स्कोरर स्टार्ट स्टेशन जहांगीर जॉन, पुल किया खूबसूरती के साथ, गैप में गेंद सीमा रेखा से बाहर, चौका मिलता हुआ यहां पर उमर मलिक को। बात कर रहे कि थोड़ा आक्रामक शैली से। थैंक यू स्कोरर स्टार्ट स्टेशन ये आंकड़ा देने के लिए। उमर मलिक जो कि ग्लोबल डाडू टाइटंस के कप्तान है, कप्तान को सामने से लीड करना होगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक बेहतर पारी खेलनी होगी इम्तियाज लेफ्टी के साथ। 51 पे 1, 8 ओवर की गेंदबाजी के बाद 6 मुकाबले इससे पूर्व इस टूर्नामेंट में ये हुए हैं। बख्शी स्टेडियम, ऐतिहासिक मैदान, लीजेंड्स लीग क्रिकेट के संभवतः 7 मुकाबले यहां पे हुए हैं। हर काफी इतिहास है इस मैदान का। के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास, और अथवास द्वारा प्रेजेंटेड ये लीग इस समय इस मैदान पे खेली जा रही है। 7वां मुकाबला। 8 के बाद 51 पे 1, उमर मलिक 12, 20 गेंदों से इम्तियाज लेफ्टी 20, 17 गेंदों से गौरव चौधरी 4 ओवर 23 कोटा पूरा कर चुके हैं, 23 रन उन्हें खर्चे हैं। विकेट उन्हें मिला नहीं, अच्छी गेंदबाजी, अनुशासन दिखा इस विकेट पे। और यहां एक और परिवर्तन गेंदबाजी में, उमर लेफ्टी को लेकर के आए। Got a ball 4 overs. Tight 4 overs. Nothing to take away from these 4 overs. Below on a ball. Ball really well. And it's Umar lefty is pressed into service. Umar has a couple of things to do in today's game. But the first ball is guided nicely by Imtiaz lefty to perfection, and he's going to get 4 for that. Good bounce on offer. And now the bounce of the surface is getting better. With no slip in place, there was outward moment. Now there is going to be the protection. He's going to use the third man fielder. Good awareness of the game.
batter shown on that occasion. And this could be a tight one, but look at the fielder. Garo isn't 100% fit. He's down on the field. He's having some issues. He pulled a cramp. There is Paras who's helping him at the moment, who's trying to bail him out here. Needs some attention of physio as it's 30 degrees Celsius this afternoon. Now the physio walks out to middle. And he walks up to Garo, who bowled 4 overs. All were excellent. He's struggling at the moment. I think better is to go off the field for a while and let the substitute come in so that physio can look at it cautiously, carefully. Who knows? You may have to go for scanning, as it isn't easy nowadays. If you pull a muscle cramp or the ligament tear, that's another problem nowadays. You can't continue. It can damage, it can lead to a prolonged session that's going to keep you away from the game of cricket. Uma lefty. He has got the ball in his hand. He can swing the ball. He's brought little late into the attack, and yesterday that was a little spin friendly track, and today it looks you need a proper spinner to keep the batter true. Look, the bounce is still good. Ball is coming nicely onto the bat. It looks a good surface. Black soil being used. It has got superb moisture content capacity, or the absorbing capacity. It's good to bat. Good thing about Global Dadoo, they have 9 wickets in hand. That's important thing. As we are into the 9th over, equally credit to the bowling unit. They kept the batters under check. And it's gone straight into the hands. Once again, it's a drop chance. Rohan Kaul is again the culprit. It's the second one gone down. He dropped on his own bowling earlier on. Now he dropped it up the bowling of Uma lefty. But that was thrashed. That was hit hard by the captain of Global Dadoo Titans. Lefty has that ability to tease and annoy the batter. He has that capacity. The pace he has got, the moment he's gonna swing it off the seam and in the air too. It's 1 over from Uma lefty. He's gone for 9. After 9, it's 60 for 1. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas. 7th match of the tournament. Take a look again. This is the dugout where Global Dadoo Titans are right now at the moment. I saw Adil Farooq Dadoo there. That's Ariel and Apish. There is a chance. He needed Superman effort, but can't make it to the ball. Well, you have to convert half chances. If you are to compete, if you want to put on a show and to regain that confidence, you have to put brakes on. Half chances need to be converted. Got to convert the chances here. At the moment, in balance, hanging in balance. Hillview will be pretty happy that
We're into the 10th over. We conceded just 63, and that's aerial again. That's Apish. That's gone flat 6. The man there at long off. He jumped in high but can't bring it down. It has got enough wings to fly. Through the line, straight bat. Good shot, good connection in the end. This time down to the long on. Ball is coming nicely onto the bat. He's trying to go back of a length, but it is going around that length and on the rise. Easy pickings. Dislodge the bails. Trying to force the Skellig umpire. He looks unmoved. So no problem at all. Bright sunshine. Today's temperature is 30 degrees Celsius. Gentle breeze is here. That's another important aspect. Closer the bat face, and there was extra bounce on offer, and there was a little drift in the air. And that marks the completion of 10th over, halfway stage, halfway mark. Time for drinks in the middle. And this is JK Super Cement Rad Premier League, presented by Athwas. And these are the sponsors. And Banai Mazboot Kashmir, Build Strong Kashmir. The slogan of JK Super Cement. Halfway stage, they are 70. The next 10 overs are going to be important 10 overs to come. Going 7 and over. Little improvement. It was a bit expensive over from left arm spinner where we saw runs coming in. These are the shots from first phase of 10. Take a look again. That was a delightful Apish aerial from the bat of Sarshil Abbas. That was a slog hit. Some of the cracking shots we saw within 10 overs. Intent was there. And that is the mistake he made and paid the price for that. Lefty coming in at 3. That was nice improvisation. Even switch hits coming into play. When bowlers were trying to weave that web and magic, they did really well. Going for the reverse sweep or the switch hit like shots. That allowed them and that helped the batters to some extent break free. And Imtiaz does well, breaking free. Some of the quality pull shots, aerial and upper shots, couple of sixes. Look, that was a delicate guide. To me, that was excellent hit. For a while, I thought a long off is going to be in play, but that wasn't the case. There is Majur Sophie, the pace battery, the man who can do wonders with the ball. He's playing for Global Dadoo Titans. And there it is, Adil Farooq Dadoo. He's got another members alongside. Match number 7. And finally, the voice is back. Mr. RJ Rafiq is there, and we have Nazir in the com box. धन्यवाद। 10 ओवर का पहला सत्र समाप्त 70 बने। 1 विकेट अभी तक खोया है जीडी टाइटंस ने। हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध रोहन कोल ने 3 में 26 दिए हैं। और डग आउट जीडी टाइटंस का। उमर लेफ्टी के हाथ में गेंद थमा दी है। इम्तियाज लेफ्टी 30 पे 25 गेंदों से, उमर मलिक ने 24 गेंदों से। 11वें की शुरुआत, दूसरा सत्र 10 ओवर का प्रारंभ होने जा रहा है।
कहां तक पहुंच पाएगी ये टीम, जीडी टाइटंस देखना होगा। जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास, सेकंड एडिशन 2025, 7वां मुकाबला। 70 पे 1 उमर लेफ्टी, एक ओवर की गेंदबाजी 9 रन खर्चे, दूसरा ओवर छोड़ बदला गया है। ऑप्शन से बाहर, बेहतर स्ट्रोक है, गैप में गेंद सी में रेखा से बाहर, चौका मिलता हुआ यहां पर 4 और खाते में। जैसे देखा ऑप्शन से थोड़ा बाहर ये गेंद है, टूट पड़े उस पे बल्लेबाज उमर लेफ्टी के विरुद्ध ये चौका। और उमर मलिक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स, इम्तियाज लेफ्टी और उमर मलिक। बेहतर साझेदारी निभाई है, बोल्ड कर दिया यहां पर अगली ही गेंद पर। यहां हिसाब जुगता होता हुआ, पिछली गेंद पर चौका, अगली गेंद पर वापस। 74 पे दूसरा विकेट गंवाया है यहां जीडी टाइटंस ने हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध। उमर लेफ्टी जो एक बेहतरीन गेंदबाज है, वापसी करना जानते हैं, और उतनी ज्यादा उछाल थी नहीं, नीची रहती हुई गेंद स्टंप्स पे जा टकराई, पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया। विकेट मिलता हुआ यहां पर उमर मलिक का, उमर लेफ्टी को। खूबसूरत गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद। विकेट यहां पे उमर लेफ्टी के खाते में, पहला विकेट अर्जित किया है 1.2 ओवर की गेंदबाजी में उमर लेफ्टी ने। 74 पे दूसरा गंवाया। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, मात्र दूसरी गेंद पर विकेट मिला। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मोमेंटम में बाधा जरूर आई है। बेहतर खेल रहे थे, अच्छी साझेदारी निभाई थी। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मात्र दूसरी गेंद पर वो विकेट मिला। अथर्वा काले नए बल्लेबाज जीडी टाइटंस के लिए नंबर 4 पे। और एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। इम्तियाज लेफ्टी भी जो बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट हैं, 30 बनाए हैं 25 गेंदों से, और उनके विरुद्ध कोशिश जरूर होगी। अगर उमर लेफ्टी की बात करें, गेंदबाजी में आत्मविश्वास दिखाना होगा, थोड़ा सा परखना होगा गेंदबाज और विकेट को। ऑन साइड में एक सिंगल के लिए तेजी के साथ, पर दूसरे की मांग जरूर थी, पर इम्तियाज लेफ्टी ने वापस भेजा। थोड़ा सा फिसलन के कारण वो वापस लौट नहीं पाया, जिसके चलते मात्र एक ही रन मिलता हुआ यहां पर टीम को। 75 और 30 पे इम्तियाज लेफ्टी अब सामने। और इम्तियाज लेफ्टी एक बेहतरीन शांत स्वभाव के खिलाड़ी, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट जरूर किया है, बड़े स्ट्रोक जरूर खेले हैं, सम्मान जरूर अच्छी गेंदों को दिया है। तो बेहतरीन पारी अब तक उन्होंने खेली है अपनी टीम के लिए। इस पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा इम्तियाज लेफ्टी को। लेग स्टंप की शेप में दिशा और लंबाई से भटके, और नियंत्रण नहीं, कुछ बातचीत जरूर अंपायर से, पर रवि कुमार चौरसिया ने साफ इनकार किया, स्वीकार नहीं किया उस प्रश्न का उत्तर नकारते हुए। 76 पे 2 वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। इम्तियाज लेफ्टी 30 पे। उनकी टीम चाहेगी कि वो अंत तक खेले, एक बेहतर पारी खेले, पर स्टंप्स पे ये गेंद थी, मिड स्टंप क्यों आ रही थी, वापस बॉलर की दिशा में खेला इम्तियाज लेफ्टी ने सीधे बल्ले से बगैर किसी रन के। 30 रन अभी तक उनकी व्यक्तिगत रन संख्या, और कुल रन संख्या 76, मात्र 11वां। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 8 विकेट सुरक्षित हैं। पहले सरशील अब्बास और फिर दूसरे विकेट के रूप में उमर मलिक। लेग स्टंप पर लाइन के सारे फ्लिक किया गेंद को, एक सिंगल मिलता हुआ। मानसिकता बहुत बढ़िया इस बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी की। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक्स आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में वो 1-1, 2-2 रन से संतुष्ट हो रहे हैं, ये देखते हुए कि रनों की आवश्यकता है। 10 से 14, 15 तक ले जाएं, विकेट आपके हाथ में होंगे। अगले 5 जो अंतिम ओवर्स होंगे, उनमें आप बेहतर प्रहार कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, सिंगल मिल जाएगा, एक और सिंगल मिलता हुआ। 7 रन अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं। ओवर की समाप्ति 11 के बाद 78 पे 2 जीडी टाइटंस।
Hillview, keeping the current situation in view, getting rid of the partnership that was taking this one away. They were working on the basics in good fashion and they were scoring runs. 11 gone, 2 for 70. Duma lefty. He's the man who got rid of the partnership. Another change in the bowling department. Captain is going to try all the options the way he did yesterday. Likewise, it looks like that he's going to do that again here. Anuj Kumar will bowl. Southern Pavilion and is an area where from he's going to operate. Driven straight, quality shot. Good start and over. Atharva Kale welcomes Anuj Kumar with a beautiful shot. Extension of arms. Back past the bowler. Over the head of umpire into the fence. Straight. Showing some intent. Next time, that is aerial, that is Biggie, and it's out of here again. A little step out, a length ball again, and punished in style. It's a punishable act. Look, against the likes of Atharva Kale, he can be nightmare, but it will be early to say he's going to carry on like this. Let's see how he will carry on. How he's going to prosper with the passage of time. Is he going to progress? It's 2 for 88. That's little uppish. But it's in the gap again. It's run fest. He's showing that hunger for boundaries here. He's scoring at a good pace. Little bit of an offer. Takes it on the full. And dispatched it through extra cover. Look at that shot again. Scare driven this time. And no chance for the man in the deep. Unable to get to the ball. He's got that power behind the shot. He's generating a lot of power. Two for 92 in over number 12. And that one, that's gone. Oh, sloppy. What you have done, he's made mess of that. That's going to be 4 again. It's 18 of 4 balls. Fumble, misfield. Look again, he goes aerial. There is no look back in his textbook, in his book, and he's going to go after Global Dadoo Titans. And this lad, Atharva. Look again, that's gone in front of Scaron Dion. That's another boundary. What's going on? It's boundary number 4 or 3, third. Let's see. Let's find it out. Number of boundary fours. Let me confirm. It's 4 boundaries and 6. That makes it 22 of 5 balls. Anuj Kumar is under the pump. Atharva is on top. Now trying to guide it. Great presence of mind. Took pace off the ball. Slower one in the end. It's on and up for Global Dadoo Titans after 12 overs. An over from Anuj Kumar. One big over. If we go through that histogram, it's going to show the one big skyscraper or the big building block. Look, it's 22 of an over. One big over. Changed the complexion of the game. And all of a sudden, some of the big shots, fearless approach, glorious hitting, some of the quality shots off the bat of Atharva Kale. Look, that one. Oh, he admired that one. So nice. And this is what we saw in that over. The carnage, absolute carnage. Brutal hitting.
brute force used by Atharva Kale, and that is the misfield. That's what you call, he's made mess of that. This wasn't good at all. That was another quality pull shot. For a while I thought it isn't timed well. Once it gone past the boundary cushion, it proved that there was enough pace behind the shot. Yeah, it didn't middle properly. 100 on the board. Pawan Nirvani to operate. First, a fresher, first ball. Now Imtiaz lefty joins the party. It's gone onto the tent. Who's going to bring the ball back? Oh, it's come down. It comes down. We'll take a look again. Slog sweep. Slog hit. Aerial. Take a look again. And this is the camera work. This is the art of camera team. Wonderful scenes. High. Soaring high into the day sky. 106. Carnage continues. Looks like that Imtiaz lefty is going to carry on where Atharva left. Oh, next ball is gone here. The very next ball. Pawan Nirvani has his man. Again going in the same direction. He's disgusted. Punching his bat. Knows that it was better to go with the basic techniques. There was no need to launch big again. Take a look. Oh, it's come up the bat. Little bit up the bat. It's played on here. And that brings curtains down. And Imtiaz lefty got to go. Nirvani has his man. This time there was little bounce on offer. The other one that came right out of the middle. But this one it stays touch low. Misread it. Not a proper connection. 106 for 3. So commentator's curse, I can say. We're talking about that. Is he going to carry on? Is he going to continue with the same pace? Is he going to launch big? But it is the bowler who has the last laugh. इम्तियाज लेफ्टी अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज. पिछली गेंद पर छक्का, अगली गेंद पर उसी प्रकार का स्ट्रोक अंदरूनी बाग स्टंप्स पे जा टकराई और प्ले डाउन होकर के निराश कदमों के साथ वापस लौटे. 300 के स्ट्राइक रेट से अथर्वा काले इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं. 8 से 24, 106 पे 3, 12.2, 13वां ओवर. पवन निर्वाणी को मिलने वाली है पहली सफलता. अपने पहले ही ओवर में इम्तियाज लेफ्टी को उन्होंने वापस भेजा. अब उनके स्थान पर नंबर 5 पे इम्तियाज लेफ्टी का स्थान लेने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज अबू तालिब संभव थे, छोटे कद के खिलाड़ी. और कर्नाटका से अबू तालिब को आज अवसर मिला है जीडी टाइटंस के साथ खेलने का. 106 पे 3. पहली गेंद अच्छी गेंद थी. पड़ने के बाद हल्का सा टर्न जरूर था बाहर की तरफ सरकती हुई. चकमा जरूर दिया वहां पर बल्लेबाज को. और थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखाना होगा, थोड़ा सा संयम, और संयम की आवश्यकता भी. यहां एक सिंगल मिल जाएगा अबू तालिब और उनके साथ अथर्वा काले को. 1 रन और खाते में. 107, 12.4. अबू तालिब 1-2 गेंद से 24 पे सामने. अथर्वा ने आते ही बड़े प्रहार, वो पिछले ओवर में 22 रन उन्होंने बटोरे थे. बेहतरीन आक्रमण किया था. इस बार खूबसूरती के साथ एक बार फिर गैप में दिशा देते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए. अथर्वा इरादे स्पष्ट कर दिए उन्होंने शुरुआत से ही. पवन निर्वाणी एक बेहतरीन गेंदबाज हैं. ये देख लीजिए, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकाला. ये 4 अर्जित किए. आउटफील्ड काफी तेज है इस मैदान की अगर हम बात करें बख्शी स्टेडियम श्रीनगर. एक सिंगल मिल जाएगा.
यहाँ पर अथर्वा और अबू तालिब को 29 पे अथर्वा 10 गेंदों से, और अबू तालिब 1 पे 112 पे 3, 13 ओवर की समाप्ति। सरशील अब्बास, उमर मलिक और इम्तियाज लेफ्टी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। अबू तालिब और अथर्वा काले बीच मैदान में। 172 प्रोजेक्टेड स्कोर। अगर वर्तमान रन गति से रन बनाती रही जीडी टाइटंस की टीम हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध, 7 ओवर का आना बाकी। पवन निर्वाणी 1 ओवर 12 रन 1 विकेट। कमाल के दृश्य, खूबसूरत समा, आकर्षक क्रिकेट के अनुकूल वातावरण, ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम श्रीनगर। 7वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास। 7 ओवर का खेल, 7 विकेट सुरक्षित। पर अथर्वा गजब के फॉर्म में है, एक बेहतरीन पारी, पर इस पारी को बड़ा करना होगा। लेट कट किया जरूर, पर फील्डर तैनात थे। नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से आगे जरूर निकले थे, पर मना किया वापस, क्योंकि उस ओर फील्डर तैनात थे, तो ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 112 पे 3। अथर्वा सामने इस बार, अच्छा शॉट, बेहतर शॉट, पीछे फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। थ्रो विकेट कीपर के पास, पर समय था सिंगल लेने का। 1 रन और खाते में। 113 तक टीम पहुंच चुकी है 14वें ओवर में। रजित शर्मा का यह तीसरा ओवर है। 2.2 ओवर अनुशासन, 12 रन मात्र खर्चे, 1 विकेट मिला है। बाएं हाथ के गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा इस विकेट पे अब तक अगर देखा जाए इन मुकाबलों में। अबू तालिब और अथर्वा काले, ये जोड़ी बीच मैदान में। ये बेहतर शॉट है, और खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात, वो दर्शक बनेंगे, मैदान से बाहर जाएगी। 6 का निर्णय आता हुआ बलविंदर कुमार सोनी का। एक और छक्का। अथर्वा आज अलग रंग में दिखे हैं जब से वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। वो आत्मविश्वास, वो क्षमता, प्रतिभाशाली क्रिकेटर, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरे हैं बीच मैदान में। वो बॉडी लैंग्वेज देखते ही बनता है जब से वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। खूबसूरत प्रहार किए हैं। एक खूबसूरत शॉट था। एक बार फिर गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज अथर्वा काले द्वारा। 40 उनकी व्यक्तिगत रन संख्या पहुंच चुकी है। जीडी टाइटंस इस 7वें मुकाबले में हिलव्यू राजौरी के सामने पहली बारी के आधार पर। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन इस विकेट पे। 124 पे 3, 13.5, 12 रन आ चुके हैं 5 गेंदों से। रजत शर्मा ने 2.5, इससे पूर्व 2 ओवर अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, 11 रन दिए थे, पर 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में। यह एक और सिंगल इस अंतिम गेंद पर। ओवर से आए 13, 14 समाप्त, 125 पे 3। जीडी टाइटंस। Rajat, economic. 3 was 1 for 24. But looking at Abu Talib and Atharva Kale, one coming from Karnataka and the other one coming from Pune. And you know that Pune and Karnataka, they have some of the big names, some of the big stars produced by Pune and Karnataka. And Karnataka is one of the best teams when it comes to the Ranji Trophy and the first class cricket. And take a look, this is their dugout. And Karnataka has produced some of the great cricketers of all time. And this boy coming from the Sam part of the world and Sam part of the country, where there is talent in its abundance, there is huge competition, there is huge and stiff competition. And look, this lad is coming from that place of the world, so there is going to be something special in this lad. Likewise, he's living up to his expectations. And Abu Talib, the other batter who's coming from, Abu Talib is coming from Karnataka, and his partner Atharva Kale is coming from Pune. We'll have to wait and watch. There is going to be a check. No, umpire has given it a 4, so that's 4. For a while I thought it might be referred to the TV umpire. And it's a fielder's call there, and he says that that's 4. Look at that shot again. Picking spin here, trying to read it properly. As of now, he's looking successful. Let's see with the passage of time, is he going to be successful enough
Pawan Nirvani. Oh, look, this is called the solid block. And that's what cricket is all about. Now, he's unhappy. He was just trying to pick it up again, but that's good cricket to me. Controlled his adrenaline flow. Nice control shown by Atharva Kale on to 45. Once again, he shortened at the length and provokes him to have a push on it. It's 3 for 130 as we are in over number 15. Abu Talib 2 of 3 and Atharva Kale. What an innings. Incredible, this masterpiece from Atharva. Talib goes for the sweep. Doesn't get hold of that. Unable to connect it properly. Gets hit on the pad. There is going to be a little discussion. Atharva comes across. And he told Abu Talib that this isn't the need of an hour. You have to go with a straight bat, as this lad is trying to turn and allow the ball to get some drift up the surface. Punch comes into play. 1-3-1 for 3. A ball to go in over number 15. Now Global Dadoo Titans, they have runs on the board with 7 of the batters in kitty with 5 overs to go. The remaining 5, it's going to be the death phase. One thing remains to be seen. Who will prevail in the next 5 overs? Having 7 in kitty, let's see what kind of think tank they're going to use, how they can strategize the things in the next 5 overs, what kind of strategy they're going to bring into play and use in the next 5 overs. This over we have seen 7 of it. First ball gone for 4, then just 3 singles coming. That's good comeback. That's nice comeback. He conceded a boundary of the very first ball. Those who have something special in their arm, possessing skill set, they are very effective on this surface. Yeah, it's a batting track nowadays. There is not that much for the spinners or the pacers. But if you are a good bowler, you can hit the right lines. You can use the slower bouncer in between. You can bang in short one. You can make the ball climb. I'll take a look again. This is Global Dadoo Titans. Amir Aziz and rest of the pack all smile. Wasim Raza is another lad there in the lineup. He's such a big lad. He's such a big name in Kashmir cricket. Wasim Raza is there. And these are the 2 big names. And there is Sameer Bell. Is he going to ring the bell with the ball today? Ram Dayal has got the ball. After 15 overs, Ram Dayal has got the ball in his hand. With the older ball, what he's going to do now? Let's see. Let's find it out what he has in store and how he's going to operate in today's game. As they lost the game number 1 yesterday, and it's their game number 2 and overall match number 7 of JK Super Cement, a Red Premier League presented by Athwas. Ram Dayal. Experience is there, number of matches, the runs and the wickets, everything is there under his belt. He's one of the big names from Jammu province. One of the noon faces from Jammu. Full toss. Hit hard. Gonna beat the man. The power is there. And that brings a 50 for Atharva Kale. Standing ovation. Standing ovation from the boys in the dugout. And why not? He deserved that. It's a 20-ball 50. It's the fastest 50 thus far so far in the tournament. And correction comes in. Sahil brought up his 50 of just 19 balls. And this lad has brought up his 50 of 20 balls. And these are the 2 stats we are sharing with you guys. And 8 fours, including 2 magnanimous 6s. Batting with a strike rate of 255. So nice from Atharva Kale. Full toss. Kneels down on one. There is a man. Should be taken. It is. And Ram Dayal has his man. Celebration from Ram Dayal. Removed danger man. And Atharva Kale is gone. He's gone on 51 of 21 balls. Take a look again. Knelt down on one knee. This time can't find that safe zone of long on fence. And he knelt down on one knee, going too low on that occasion.
And look, and he's walking off the field. There is someone to capture these moments as he brought up his 50 of just 20 balls. And that you called the serious intent, sign of aggression. It was aggressive knock. That stay comes to an end. I once again standing ovation in the dugout. He's going to absorb that round of applause. Everyone is impressed. They're thrilled to celebrate that too. The second fastest 50 of the tournament. It's come off 20 balls for Atharva Kale. That brings Wasim Raza. The stage is set. What the local boy is going to do now, it remains to be seen. Let's find it out together. Only on JK Sports Time Facebook, moreover JK Sports Time YouTube and Red FM JK. As this is season 2 of Red Premier League. This time round, there is a customary handshake and hugging each other, Wasim Raza and another legend from Jammu province. This is heart-winning. It was Puneet Kumar there who met the legend from this part of the world. He's coming from other province, showing that bond, the unity, that tranquility and harmony, the communal harmony we have had in this part of the world. That's so nice. To short cover, a single 1-3-7 for 4 as we are in over number 16. अथर्वा काले एक बेहतरीन 51 रनों की पारी खेलने के बाद चौथे विकेट के रूप में रामदयाल का शिकार बने और उनके स्थान पर वसीम रजा एक और लीजेंडरी क्रिकेटर और बेहतरीन और शानदार प्रयोग जहां से करना होगा इन दो बल्लेबाजों को 137 पे 4 15.3 के बाद 20 ओवर की यह पारी 16वां ओवर अबू तालिब 3 वसीम रजा भी अभी आए हैं रामदयाल को एक विकेट मिल चुका अपने पहले ओवर में 5 रन दे करके काफी लंबा बॉलिंग लाइनअप है उनका पर अनुभव भी है रामदयाल के पास अबू तालिब ने इस बार खूबसूरती के साथ खेला पीछे तैनात हैं खिलाड़ी जब तक वे गेंद को लॉन्ग ऑन से फील्ड करके थ्रो करते एक सिंगल मिलता हुआ यहां पर रन संख्या अब जाकर के 138 तक पहुंची है वसीम रजा होंगे सामने अच्छी बल्लेबाजी इम्तियाज लेफ्टी अथर्वा काले उमर मलिक आज सरशील अब्बास खास योगदान नहीं दे पाए वसीम रजा के लिए रामदयाल और रजा एक बेहतरीन खिलाड़ी है सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना बेहतर तरीके से जानते हैं खूबसूरत स्ट्रोक बेहतर फील्डिंग रन आउट सीधे स्टंप्स पे डायरेक्ट हिट और कमाल की ये फील्डिंग और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई और इस प्रकार से ये विकेट यहां पर अबू तालिब को वापस लौटना पड़ेगा हालांकि कवर्स में खेल करके दौड़ पड़े थे और जब तक वो खतरे वाले एंड तक पहुंचते उससे पूर्व ही डायरेक्ट हिट कमाल का ये थ्रो सीधे स्टंप्स पे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे संभवतः स्ट्राइकिंग छोड़ पे ये विकेट मिलता हुआ उपहार के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर के मैदान से बाहर चले गए 5वां विकेट गवाया 15.5 में 138 पे 5 हिलव्यू राजौरी धीरे धीरे से वापसी करते हुए इस मैच में बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं अगर जीडी टाइटंस की बात करें ग्लोबल डाडू टाइटंस की बात करें कोशिश 170 180 तक पहुंचने की पर हिलव्यू राजौरी ये रन आउट देख लीजिए और सीधे स्टंप्स पे विकेट मिलता हुआ 138 पे 5 15.5 के बाद रामदयाल इस ओवर में एक विकेट ले चुके हैं एक रन आउट के रूप में विकेट मिला है तो कुल मिलाकर इस ओवर के भीतर 2 विकेट अभी तक मिले हैं एक रन आउट के रूप में और एक विकेट रामदयाल को मिला था अथर्वा काले को उन्होंने कैच करवाया था 138 ये 7वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास हिलव्यू राजौरी का यह दूसरा मुकाबला और एक मुकाबला इससे पूर्व खेले हैं उसमें हार का सामना करना पड़ा इस दूसरे मुकाबले में
वो जीडी टाइटंस के सामने। जीडी टाइटंस का ये पहला मुकाबला है। हालांकि अभी सोप और स्टैलियंस की शुरुआत होनी है। अगर बात करें, उन्होंने अभी तक किस प्रतियोगिता में मुकाबला खेला नहीं है। वहीं पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की बात करें तो उनका आज पहला मुकाबला आज शाम खेला जाएगा। तो बड़े महासंग्राम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, वो कांटे की टक्कर के मुकाबले। पर एक बात तय है कि विकेट अब बेहतर से बेहतर नजर आ रहा है बल्लेबाजी के लिए। जो पिछले 1-2 मुकाबले हमने देखे वो गेंदबाजों के लिए अनुकूल विकेट था, पर उसके बाद से अब बेहतर विकेट बल्लेबाजी के लिए। ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आ रही है, अतिरिक्त उछाल मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा क्रिकेट। 16 समाप्त 139 पे 5। रजा 1-2 गेंदों से। दर्दिश गोनी आया नए बल्लेबाज, 1 रन उन्होंने भी बनाया है। दर्दिश और वसीम रजा जो कि लोकल खिलाड़ी हैं अगर कश्मीर क्रिकेट की बात करें, पर अच्छा खासा अनुभव दोनों बल्लेबाजों के पास। हालांकि फॉर्मर रणजी क्रिकेटर रह चुके हैं वसीम रजा, और दर्दिश के पास भी अच्छा खासा अनुभव है। और इन परिस्थितियों में आखिरी 4 ओवर 10 रन प्रति ओवर 40 तो 180। और कोशिश जरूर हो गई अगले 4 ओवर में करीब करीब 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन संख्या को बढ़ाया जाए, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता दी जाए और 180 तक पहुंचा जाए इस मैच में। क्योंकि हिलव्यू राजौरी के पास बल्लेबाजी बहुत बेहतर है। और पिछले मुकाबले में पुनीत की वो पारी, कमाल की पारी खेली थी पुनीत कुमार ने, और उनके साथ अन्य जो बाकी खिलाड़ी थे उन्होंने भी अच्छा योगदान दिया था। तो एक माइंडसेट जरूर रहेगा यहाँ पर जीडी टाइटंस का कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाया जाए, एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया जाए और दूसरी पारी में एक चुनौती दें उनके गेंदबाज टीम हिलव्यू राजौरी को। उमर लेफ्टी 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। दूसरे स्पेल में वापसी वे करेंगे गेंदबाजी। 5 विकेट गंवाए हैं, 8.69 करंट रन रेट, और इसी रन गति से 174 तक टीम पहुंच सकती है। अच्छी गेंद थी, एक सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर ऑन साइड में खेल करके दोनों बल्लेबाजों को। और जब तक शॉर्ट मिड विकेट से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते। 140 पे 5, 16.1 ओवर की गेंदबाजी। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और उसके अलावा रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर। जेके सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास, सेकंड एडिशन, 7वां मुकाबला। 16.1 में 140 जीडी टाइटंस ने बनाए हैं। अर्धशतक की पारी, वो बेहतरीन पारी खेली आज अथर्वा काले ने। खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गैप में गेंद, चौका मिल जाएगा 4 और खाते में। उमर लेफ्टी के विरुद्ध ये चौका वसीम रजा के बल्ले से खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला। 2 खिलाड़ी उस ओर जा रहे थे, पर गेंद की गति फील्डर की गति से काफी तेज थी और 4 रन और खाते में जोड़ लिया बल्लेबाजों ने। 144। इस पर लेगो मिडल पे आती हुई गेंद को हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में खेला। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास रन बटोरने का अच्छी रणनीति। सिंगल डबल से चौके, क्योंकि इस ओवर में अब तक 3 गेंदों से 6 रन आ चुके हैं, तो 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी। 145 पे 5, 16.3 के बाद रजा और दर्दिश गोनी। दर्दिश सामने 3 पे 2 पे और 6 रन बनाए वसीम रजा ने। 145। एक और हवा में स्ट्रोक खेला हुआ, पर एक सिंगल केवल मिल जाएगा यहां पर दर्दिश को। दर्दिश अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छी मानसिकता के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। एक सिंगल और यहां पर खाते में। 140। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। अंतिम गेंद का आना, 2 गेंदें संभव थे। जी हां, वसीम रजा 6 पे सामने। आक्रामक शैली से और खूबसूरती के साथ स्कूप किया गेंद को, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चतुराई भरा ये स्ट्रोक वसीम रजा का। अनुभव है, क्षमता है, बेहतर प्रयोग किया। 4 रन बटोरे एक बार फिर उमर लेफ्टी के विरुद्ध, और खूबसूरती के साथ, वो भी तेज गेंदबाज के साथ पूरी तरह से संतुलन बनाए रखा वसीम रजा ने, और 4 और बटोर लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी वसीम रजा द्वारा जीडी टाइटंस के लिए। 150 रन पूरे होते हुए 150 पे 5।
11 रन ओवर से आ चुके हैं और एक और बड़ा स्ट्रोक हवा में है, गेंद कोई मौका नहीं, एक टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका। 15 आए ओवर से, 17 समाप्त, 154 पे 5। Improvise, then a drive or over mid-off. Striking gold. Golden strike of the bat. As 4 runs coming off the bat of Wasim Raza to end the over on a high. 154 for 5. 18 balls remaining. 3 overs are gonna come. 10 and 0, 184. Should try to finish at a 184, 190. They will make it a good contest. That will give the bowlers extra bit of cushion and something to bowl at, and they will feel that they can defend. They have runs on the board. Having runs on the board is going to put pressure on the other side, the opponent side. Projected score is showing 181 is gettable. If they carry on with the same pace. Ramdale 101 for 7. Just a single, and that's good running between the wickets. Chipped in with a single, a quick one. Well, it's 155 for 5. 155 for 5. Interesting figures. It's 155. 18th over, we are in the first ball. Just a single. That isn't gonna that isn't gonna create any sort of problem for the bowler, and that isn't gonna put any sort of pressure. But the big shots will do a damage this time. There is a shot for out LBW. It's outside the line of off. Impact is pretty outside off. So straight away, Balwinder Kumar Soni shakes his head and says it's clearly outside off. Shuffle across from Wasim Raza, and Raza is trying to open up that short fine leg area. He's eyeing and trying to target that zone. There isn't anyone behind scare. Once you beat that man on edge of the circle, you're gonna find more than one. Sometimes you get 4 for that. Ramdayal telling Goma lefty, just touch the circle. In his second over, 1 for 8. Dardish, he's generating pace, he's hitting the ball hard. When it comes to the running between the wickets, he's so good there. He's strong lad between the wickets. 2 gun players, 2 fit lads, fittest lads in the middle. You know that Wasim Raza and Dardish, their running between the wickets is awesome. They're quick and cheeky. 3 singles in an over here. A big shot, and that's done the distance. What a connection again. He connected that one, belted for half a dozen, and it's come up the bat of Wasim Raza. Once again, a step inside, step in, and then goes for a mighty hit. Some 7 rows back into the grandstand. 163 this over, makes it 9 of 4 now. This time step out, trying to open up offside. Look, he walks slowly up to the pitch of the ball, and Wasim Raza has that talent, ability. Played for JKC is never easy. It takes that caliber and class, making it to the Jammu and Kashmir Cricket Association, when there was huge potential across country, and he was there to represent JKCA. Good shot in the gap. Man patrolling on the boundary as a sentinel to stop the ball. It's 10 off his second over. His 2 overs gone for 16. 2 overs are gonna come. If they go 10 and over, they will find themselves 184 around that. More than that will be 190
is going to be on cards. Two titles Hillview need at the moment. Breaks on should be going on in his mind at the moment. Breaks on, dry up runs, especially the boundaries. Well, singles won't hurt, but the big shots do hurt, and that will do the damage. The batter's gonna try. They have 5 wickets in kitty. There is nothing to lose. Their dugout looks calm at the moment. But I can see there is Amir Aziz, who's warming up a bit. Is trying to tighten the shoelace. And it's just like that. Brace yourself for the next moment as he's getting ready. Good looking shot onto the onside. Gonna be single. Some of the big names playing for Hillview Rajouri, 5 of them or 5 or 6 represented state. Playing for state is never easy because you have to face some of the big lads from other parts of the country when you play that domestic level cricket. When you play the red ball and the white ball there and the shorter format. And the shorter format is played on white ball. And look at the running between the wickets. That's what I was talking about. But I think he's run out here. He's short of his crease there. That is a spot on shy. Look, he was trying to pinch that second run. That's what Wasim Raza is known for. He's known for quick running between the wickets. This time he's caught short of his ground. Look at that shot. The way he controlled that. You have to ask this lad, Dardish Guni, how you do these things. How you manage. It's only up to Dardish. There is an excellent shot from the boundary line as he caught him short of his ground. That is his excellence and accuracy. Talking about that lad who sent in a shy, and once in Ranji Trophy game, Wasim Raza caught Gautam Gambhir short of his crease. Now, Hillview Rajori player caught him short of his crease there. That brings Gawar Rashid. He has a role to play later on with the ball. Getting an opportunity with the bat. It's 166 for 6. 10 balls remaining. Umar lefty. He will finish his quota here. Umar lefty is 15 runs away from achieving that milestone. Is he going to touch that milestone in today's game? On drive. You can't take risk there. He's so quick. Nirvani. It's 167 for 6. 9 balls are going to come. 170 or 180. Remains to be seen. Gawar Rashid promoted only to hit the ball. There is a fumble. This is another mistake. Well, you can't afford these mistakes. You need to back your bowler. You have to try to dry up runs, but look, he has made mess of that. And this way you can't. It's hard to put brakes on when you leak runs like this. Still a good over. But that shot, look at the power of the blade. Colossal it is. It's mighty. It's gone some 8 or 9 rows back. The power it generates. Look at the technique of the lad. Look. Wow. He's generating power and he's not using that extension of arm. He's closing his arms a bit. That power will surely gonna ask him and ask him later on what you have in store. But that's a biggie. That's a mighty 6. The next one is going to be a precious dot again. He was eyeing it over square leg.
or the mid wicket zone is beaten completely. It's 174-10, the over number 19. And Umar Lafty finished his quota 4 overs, 1 for 41. Shade over 10 and over, that is the economy. Today he's gone for runs, plenty of them. With final over to come, who will bowl? It's over to you. धन्यवाद मनवर. कमाल का स्ट्रोक दरदिश के बल्ले से पूरी तरह से कंट्रोल में थे. 19 के बाद 174. गौहर रशीद को खाता खोलना है. 13 दरदिश ने बनाया है 9 गेंदों से. या आखिरी ओवर बड़ा करना होगा. वो जो 180 तक पहुंचने का प्रयास था वो सफलतापूर्वक उसके नजदीक पहुंच चुकी है जीडी टाइटंस की टीम. हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध 7वें मुकाबले में. आखिरी ओवर रामदयाल के पास. 2 ओवर 16 रन 1 विकेट. गेंदबाजी विश्लेषण. पहली गेंद. बेहतर स्ट्रोक खूबसूरती के साथ. पीछे फील्डर. एक सिंगल मिल जाएगा यहां पर. पहली गेंद पर 1 रन. 175 पे 6. 5 के दुकान है बाकी. कम से कम 10 रन और बटोरने होंगे. वो 185 तक एक अच्छा लक्ष्य कहा जा सकता है इस विकेट पे. पर दूसरी पारी में आपका किस प्रकार का व्यवधान रहेगा, किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, वो देखने वाली बात होगी. फिलहाल 175 रन बने हैं. इस बार रिवर्स स्वीप खूबसूरती के साथ. बहुत ही बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ. गजब के ये खिलाड़ी रामदयाल. इतनी गति के साथ गेंदबाजी और फिर उनके सामने ये मानसिकता. ओह, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, देखने लायक. इस चौके के साथ रन संख्या 179 तक पहुंच चुके हैं इस अंतिम ओवर में जीडी टाइटंस. और पहले से मन बना लिया था. 30 गेंदबाज के विरुद्ध आसान रहता नहीं है. और ये क्षमता दिखाई है. इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर थे. वो गेंद की लाइन से काफी दूर थे. ऐसे में रन मिलेगा नहीं. एक और डॉट. 3 गेंदों से 5 रन इस ओवर में. 19.3 के बाद 179 पे 6. जीडी टाइटंस जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास. 7वां मुकाबला. पहली पारी. अब अंतिम 3 गेंदें बची है इस पहली पारी में. दर्दी 17 पे सामने 11 गेंदों से. ऑफ स्टंप से बाहर एक बार फिर खूबसूरती के साथ निकाला. कोई मौका नहीं. एक और चौका. जब कभी भी मौका मिला उस मौके को जरूर बुना है चौके में. दर्दिश गोनी ने कमाल की बल्लेबाजी की है. पूरी तरह से संतुलित होते हुए जगह बना करके अपने आप को संतुलित किया. तिरछाड़े बल्ले के साथ गैप में कट किया और चौका बटोर लिया यहां पर बल्लेबाज ने. 2 चौके आ चुके हैं. 9 रन ओवर से 2 गेंदों का आना बाकी. इस बार चौक कराने का प्रदर्शन आवश्यकता के गलियारे में. सिंगल मिल जाएगा अंतिम गेंद पर. 184 पे 6. 19.5. पहली पारी की अंतिम गेंद. रामदयाल ने 26 खर्चे हैं 2.5 में. ग्लोबल डडू टाइटंस 184 9.28 प्रति ओवर के हिसाब से. पहली इनिंग की आखिरी गेंद. ओह, ये कमाल है, ये जमाल है, ये दमाल है. और जितने भी शब्द इस्तेमाल कीजिए कम पड़ जाएंगे इस स्ट्रोक के लिए. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. ठीक गेंद की लाइन में आकर के स्टंप्स को कवर किया और खूबसूरती के साथ 6 बटोर लिया. अंतिम गेंद पर यह छक्का. कमाल का स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक. ये देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन शानदार स्ट्रोक. और 6 के साथ समाप्ति की इस पारी की. 190 रन बनाए जीडी टाइटंस, ग्लोबल डडू टाइटंस ने. हिलव्यू राजौरी के बाद एक अच्छा लक्ष्य 191 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए टीम हिलव्यू राजौरी को. पर यह अंतिम जो बल्लेबाजी रही, अंतिम 2-3 ओवर है, काफी कमाल के, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया. 190 बने 6 विकेट पे. 20 ओवर में 191 चाहिए जीत के लिए. दूसरी पारी प्रारंभ होगी. लौट आएंगे लाइव एक्शन में.
अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत दूसरी पारी लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से। और दूसरी पारी में 191 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम हिलव्यू राजौरी को। ऐसे में देखना होगा, दो प्रारंभिक बल्लेबाज अब मैदान की ओर अग्रसर हो चुके हैं हिलव्यू राजौरी के। 190 रनों का जो लक्ष्य 191 रनों का जो लक्ष्य मिला आसान नहीं है इस विकेट पे, पर विकेट बेहतर खेला जरूर है। दूसरी पारी में एक मानसिक दबाव जरूर रहेगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव प्रसारण तक पहुंच रहा है। और ऐसे में 191 रन दूसरी पारी में, 20 ओवर में 191, 10 विकेट हाथ में। और पिछला मुकाबला जिसमें हार का सामना करना पड़ता है हिलव्यू राजौरी को, देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत दे पाएंगे, किस प्रकार का आक्रमण कर पाएंगे। वो पहले 6 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये 7वां मुकाबला है जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास। और ऐसे में इस 7वें मुकाबले में, हालांकि जीडी टाइटंस की अगर हम बात करें, ग्लोबल डडू टाइटंस का पहला मुकाबला है, पर एक अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया पहली पारी के आधार पर हिलव्यू राजौरी के साथ। मेरे साथ मनवर तनवीर जुड़ चुके हैं। मनवर, 191, स्वागत है आपका। Assalamu alaikum and thank you, Nazir, for your introduction and introducing myself to beloved listeners and viewers on JK Sports Time Facebook, moreover YouTube and Red FM JK YouTube. Hillview Rajouri required 191 yesterday. They were given a target of 185. Today they are chasing 191. Today they are chasing more than yesterday. And there is little increase by 7 runs. Today it's 191. Yesterday it was 185. They restrict the other side on 184 today. Today's side getting 6 runs ahead of the other score yesterday. Sarshil Abbas is warming up a bit, reflexing at the moment. Wicketkeeper is warming up a bit, trying to warm up, trying to ease up his arms, free up his arms. Talking of reflexes and the muscles, it's none for none in over number 1. Imtiaz lefty to open the attack. Captain is going with Imtiaz lefty in first over. The man who's known for those cutters. Are those cutters gonna come into play? What he will do with the ball, where he's gonna pitch it. It's a right and left hand combination. It's Suryan Sharana and Ramdayal in the middle. There is a slip Amir Aziz. At slip mid up there is Wasim Raza. First ball. Good shot and all the way. What a shot and what a strike straight away. What a start to inning number 2. First ball. And he's not looking for anything like that, a swing and turn plus bounce, and straight away it was going down. Leg easy pickings and flicked away. Flat 6. What a shot. Yuvraj Suryansh is off the mark with a blistering 6. पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन आज एक अटैकिंग शुरुआत के मूड में उस मुद्रा में दिखे जरूर हैं। वो बेहतर स्ट्रोक शुरुआत में है सूर्यांश रैना का 6 पे। शुरुआत छक्के से 6 बगैर नुकसान के। इस बार फिर हवा में गेंद है, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, पर नो मैंस लैंड में गेंद। पीछे फील्डर, उनकी पहुंच बेकार। गेंद सीमा पार, मिल जाएंगे 4 और दोहरे अंकों में रन संख्या 10 पर पहुंच चुके हैं। Into the double figures, fearless, straight away gutsy from Suryan Sharana. Both shots were perfect, and it was a length ball, little bit upwards, offered width, not in proper control, but gets what he wanted. On to 10 of 2 balls, strike rate of 500, as he's facing the likes of Imtiaz. Look at that one, stand as tall again. Dardish does well. Sarshibaz around that short mid-wicket area. They need to rotate after every single, as
The two men in the middle, it's a right and left hand combination. It's being used by Hillview Rajori. JK Super Cement, Red Premier League presented by Athwas. Match number 7 is underway between the two teams. It's Hillview and Global Dadoo. Coming into the batter, he's right behind. It's a tall man. He blocks it back to the bowler. Now the bounce is looking good. Ball is coming nicely onto the bat. That's another advantage. That's plus point for two batters. Ramdayal, look, that was coming into the batter. Going little cross the line, trying to overhit will not work. It's better to watch the ball, let it come close to you, than to work it. The other way is to get to the front foot or just lean into the shot. Plant your foot little bit outside the line and bring your bat down in time. Go with a straight bat. That will surely work on this track. Yes, on a couple of occasions we have seen ball keeping low. It stayed low again. It kept low. And he was lucky that he gets away with it in the end. Ramdayal, bringing in experience. Nearly misread. The other one. Suryansh. Shuffle across. Scare on the on. Down to the Skellig boundary for 4. And take a look. This is their dugout. But that was a quality boundary coming. And with that 4, there is addition to the tally. 16 with a loss. Look again. Little bounce on offer. It reminds me of Tharanga. He used it to shuffle across and then trying to open up onside in the same fashion. Shuffle across is never easy, but look at the eyesight, the connection, the footwork, everything is there. And in a nice fashion, he kept it away for a boundary. 16 without loss. This is... and with that, there is an end to the over number 1. First over ends on a high, 16 of it, or 16 from it. Majur Sofi. The spearhead of pace. He's got the ball in his hand now. Majur Ali Sofi. The pace express of Steve. And he also played for Jammu and Kashmir Cricket Association. Former JKC player. Now he's got the ball in his hand. He has got also academy, a cricket academy in this part of the world, where he's training the young lads, trying to boost the young talent. There is going to be change. It looked like Majur is getting ready now. Captain has given ball to Amir Aziz. Interesting. Not going with the pace express from other end. They (16) without loss after the completion of over number 1. Amir Aziz to continue. First ball, there is going to be shot for LBW and is turned down. So no problem there. As he was eyeing a big shot, I thought captain will go with Majur Ali Sofi. He decided to carry on with a spinner from other end. I think a good move, pace and spin. But that is a superb shot. Straight down the ground. And over the man at long on. What a connection. Beautiful shot. So nice. Good use of the foot. Getting to the pitch of the ball. Oh, admired that one. Delightful strike. Straight. And back past the ball. Gone past the side screen for a maximum. It's 22 for none. Nice footwork. Gives him half a dozen. The next ball single, 23 for none. It was Suryansh Raina who set the tone for the big chase as he decided to go after Imtiaz left in the very first over. The second over, and we have seen that intent from Ramdayal. The experience he's got. He's bringing in that lot of experience. And that connection that was
Excellent. And the power behind the shot. The way he admired that shot ever long gone. Wow. Beauty of getting to the pitch of the ball. Foot moment is always important. That's going to be in the gap again. Gonna be runs, 4 of them. 27 straight away. And we saw 20 coming of first 2 overs. And here we're into the second over. It's 27. Swept hard. Gone with tremendous bat speed. (27) without loss. Suryansh 19 of 5 balls. A wicketkeeper is trying to keep fielders on their toes, telling them you have to block. But this time he won't find the gap. It's 28 already on the board. That's a good start. That is a rapid start. Terrific one. Well begin is half done. Good start for a big chase is important. It will help their side. That's a good sweep shot again. And there isn't anyone to stop the ball. 2 done, 32 for none. They're going 16 and over, exactly 16. Precisely. Swept nicely. Precision is there. Oh, take a look again. Swept nicely. Proper sweep shot comes into play as Global Dadoo Titans feeling the heat straight away. Just 2 done and 2 expensive overs. Wicketkeeper shake off ahead. Not happy. Now looks like that captain is going to go with Major Ali Sophie. He was warming up, but he was asked later on to rest a bit. We will go with the spinner. We're going to give it a try with Amir Aziz, who went for 15. Ramdayal and Suryansh. Good move today. Going with Ramdayal and Suryansh Raina. When you are chasing a target of 191, which is a mammoth, which is an easy one. But these days, 190 is chaseable, 200, 230 is chaseable. And these things are only possible when you start on a good note. And in middle overs, you have to keep things going. You can't let that momentum shift the other way. When you're chasing a score like 191, you have to be consistent from ball 1, from very word go till the very last end. The fresh over. The T Express is going to bowl now. Major Ali Sophie. First ball, that's in the air. Will Imtiaz get to the ball? He takes it. What a go ball and what a take. First ball, and Suryansh Raina is on his way back to pavilion. Was trying to flick it round the corner. It gone up straight away. And Imtiaz lefty. The top notch in Global Titan side. Holding on to the ball wasn't easy. Take a look again. This T Express is among the wickets. Oh, look at that. It went up in the air. Can't close the bat face. Can't work it away. He was trying to close the bat face. It remained open till the very last end. Brilliant go ball. Absolute blinder. The hero from Budgams, Humhama area, took that blinder. Good catch. Nice go ball. Look, he was trying to work it away, but the bat didn't work. The face remained open. It went up in the air. Oh, take a look again. Good catch. Much needed breakthrough. As Suryansh Raina, he was trying to run away with a scorecard. And that's going to bring number 3. Take a look again. Once again on your screen. Oh, take a look. And that's important. Holding on to the ball. And when you fall onto the ground, you have to control yourself and that ball which is in your hand. Sometimes we have seen that ball popping out. But this time it didn't pop out. Or popped out. It remained in the safe hands. And inside the safe hands. Took that. Good control over the ball. That brings number 3. The left-hander. Once again a left-hander. Good move. Good suggestion from captain. Going with right and left. They're going to continue. And they have plenty of left-handers in the lineup.
Anuj Kumar is in at number 3. If you remember that over from Anuj Kumar, he was taken for 22 or 20 in that over, and that changed the complexion. It's where game changed completely. Inning number 1, talking of that over from Anuj Kumar, where he gone for 22, he was taken to the cleaners, and batters decided that this is an over, we have to attack it. 1 for 32. Here is Rajouri again. Short but straight to the fielder. Don't take risk. Don't take risk. Because when there is this lad on the field, don't take risk against the likes of Dardish Guni. He's going to hit the bullseye. He's so accurate when it comes to the shy. He knows how to scare up the body than to shy it in like that of a gun barrel response. 1 for 32. This is 2.2. It's 1 for 32. In the meantime, it's going to be Rajouri Sophie. This is JK Super Semen Red Premier League. It's season 2, presented by Athwas. 1 for 32 after 2.2. That's leading edge. It a little bit off. Who's going to take this one? Will he get to the ball? No way. It dropped just short of the man there at third man. Would have been second one. I don't think Nazir it was needed. Don't go cross the line. He was trying to pull the ball again. You have to watch the ball. And that one, it went up in the air. And he's lucky to survive scared. And I was talking about the Nazir. It isn't easy. There is no need to go cross the line. Try to go with a straight bat. And whenever you try to pull the ball, it's better to get right behind the ball, possession yourself, than to go with that horizontal blade. Going with that one, it isn't easy. It's better to go with a straight bat and try to punch it away. Or if you want to flick, you have to shuffle a bit or scare up your body a little bit, then to get in position and you can offer that shot. It's 1 down, 33 on the board as we are in over number 3. Here is Rajouri again. Soft hand is unable to beat the man at point. It goes straight to the man there, so no problem at all. They need a partnership at this very crucial juncture as the two openers started on a good note, on a positive note. It was 32 after 2 overs. Now it's 33 for the loss of 1. And Anuj Kumar is a bit lucky that he survived on that occasion, where he was trying to pull the ball, leading it a little bit off. Banger in shot again. A pull to perfection. But Ramdayal, that marks the... Oh, it's just the 5th ball of over number 3. That's gone for run. 6 of them. It's 39. He's trying to bang in shot again and again. But this lad is tall, lanky. Rajouri is himself tall, lanky. And he knows how tall Ramdayal is. Trying to make the ball climb. But Dayal gets it right there in his arc. And it was easy pickings in the end. With that 6, it is 39 for the loss of 1. You're watching JK Sports Time Facebook. Moreover, JK Sports Time YouTube and Red FM JK YouTube. 1 for 39. Once again, pull shot comes into play. Remarkable pull shot. And all the way for 6, number 2 of over number 3. It's the second 6 for Ramdayal. 2 on the trot. 2 on the bounce. And that one has that gone out of the stadium. Look at that banger in shot again. Not learning the lesson. And he paid the price for that. Take a look, take a look. There it is. It's out of here. It's gone on to the roadside. What a 6. It's a colossal. It's a country mile. Miles away. Take a look again. Take a look again. On that portion of... it's 3 gone, 45 for the loss of 1. And Nazir, take a look again. Rajouri Sophie, who got the experience, the pace, the temperament. He was trying to make the ball climb. There is good bounce on offer today. But he's unable to make it climb up to the ribcage area or above that, where you can bring that hook shot into play and you can bring that fine leg field into equation. Sometimes it tends to low ball. It tends to go in air and sometimes it goes flat to the scale leg or the fine leg fielder. But that one kept away from Ramdayal as he goes for a big shot. He packed it. Second time in an over. On the bounce. Successive ball is dispatched. And 2 6s. 2 magnanimous hits. 45 for 1. There is going to be another change in the bowling department.
This is good start. This is good cricket and smart one. They're looking really nice at the moment. That is called the aggression par excellence. 45 for 1 after 3. But job isn't cut out. Long way to go as they are chasing 191. The boys from Global Dadoo Titans, their experience, how they can cope up with the situation which is prevailing at the moment, as we have seen Majur going for 13 in his very first over, and by virtue of 2 magnanimous hits, mighty hits, it's 45 for 1. Anuj Kumar, flow with flourish, aerially goes in the gap, gonna be runs, 4 of them, and with that boundary it's 49 on the board. A little comeback, then slashes it hard over the infield. Take a look again. Oh, slashed nicely in a flash. Off for a walk. Gone for runs, 4 of them. 1 for 49. This time trying to go for that slog sweep. Better is to go with a straight bat, and they know that very well, but sometimes they're trying to bring that shorter boundary into equation. And they know that that portion of the ground has got the good bounce, and carrion ball is going to fly and it's going to take it away. There is that gentle breeze. Just short of man there. There is no need to go aerial. You can keep it down as they're very much in control at the moment. They're 1 down, but 49 means that you have runs on the board. You started at a rapid pace. Just in over number 4. Just the 4th over. That's another big shot. In the gap. Runs. It's 50 up. We're just in over number 4. Look at the dugout. They're cheering for every moment. And why not? It's the moment to cherish and cheer. The joyous moment. Left arm spinner. He's unable to put brakes on. He's unable to control and check the batters, as batters are going after him. 53 on the board. 2 boundaries conceded by Kunal Throat. Oh, that one. Beautiful. Beautifully hit. Over covers. Down to the extra cover boundary for a magnificent 6. And take a look again. Extension of arms. Oh, look at that. Elegance, class, and poetry in motion. Fashionable one. Great strike from this angle. Oh, lovely timing. Backs it to perfection, and with that it's 59 for the loss of 1. And one last time in this over. This over he's gone for 14. Another big over. No respite for bowlers. They lost a wicket, but that flow of runs, the runs are flowing at the moment. Runs keep coming thick and fast, and there is no breaks at all when it comes to the scoring. Those runs, it's 59 for 1 after 4. 4 समाप्त 59. आक्रमण विस्फोटक अंदाज बल्लेबाजों का, और पूरी तरह से यहाँ बल्लेबाजी हावी गेंदबाजी पे. 4 ओवर में 59 रन बना डाले हैं हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब ने. जीडी टाइटंस के बाद ग्लोबल डैडू टाइटंस की टीम. करंट रन रेट 14.75. रिक्वायर्ड रन रेट 8.25. 191 तक पहुंचना है. कुणाल थोराट, जो कि एक ओवर में 14 रन का इस्तेमाल किया गया था, पर वो भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए यहाँ पे. अनुज कुमार 15-8 गेंदों से. रामदयाल ने 9 गेंदों से 23. वो पिछला मुकाबला खास योगदान उनका रहा नहीं था, पर आज एक बेहतरीन पारी उनके बल्ले से अब तक देखने को मिली है. एक विकेट की तलाश यहाँ पे जीडी टाइटंस को अवश्य. महजूर अली सोफी नए ओवर लेकर के क्या कुछ योगदान दे पाएंगे. ऑन साइड में मिसफील्ड हल्का सा, पर पीछे बैकअप पे खिलाड़ी संभवतः
एक रन और खाते में छोड़ दिया। ये 5वें ओवर की गेंदबाजी, पर जिस प्रकार का शुरुआत से ही अटैक किया है गेंदबाजों पे, वो आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप शुरुआत में ही गेंदबाजों पे अतिरिक्त दबाव बनाएं, उनको सेट होने का अवसर ना दिया जाए उस विकेट पे। वो आज शुरुआत की थी सूर्यांश रैना ने, और उनका एक खूबसूरत कैच लपका था इम्तियाज लेफ्टी ने, और वे लौटे थे वापस पहले विकेट के रूप में। लेकिन उसके बाद से जब से अनुज कुमार आए रामदयाल के साथ, तो व्यवहार उसी प्रकार के देखने को मिले हैं। खराब गेंद लेग स्टंप पर आमिर अजीज तैनात निकले, आगे जरूर थे रन लेने के लिए। अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा दोनों बल्लेबाजों को। 60 पे 1, 5वां ओवर। पावर प्ले ऑन पर 4.2 में 60 स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। 131 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्रिकेट महान निश्चिंता होगा गेल, पर विकेट जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार का शुरुआत मिला है, जो मजबूत आधारशिला प्रदान की है पहले सूर्यांश रैना और रामदयाल ने, और अब जाकर के अनुज कुमार भी एक बेहतरीन पारी। एक और गजब का, एक कमाल का स्ट्रोक है, वो सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एक कहानी जहां से प्रारंभ की थी सूर्यांश रैना ने, और उस कहानी को लगातार प्रवास देते हुए ये बल्लेबाज महजूर अली सोफी, और स्पॉट से पिक किया खूबसूरती के साथ मिडल ऑफ द बैट से सामने की ओर। ये बड़ा छक्का, इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि, 66 रन संख्या पहुंच चुके हैं कुल। एक विकेट पे मात्र 4.3 ओवर की गेंदबाजी, तो कल्पना कर सकते हैं आप क्या विस्फोटक अंदाज अपनाया है अनुज कुमार और रामदयाल ने। 21 पे 10 गेंदों से अनुज कुमार, महजूर अली ने 20 रन खर्चे हैं। एक विकेट जरूर मिला है 1.3 ओवर की गेंदबाजी में। खूबसूरत स्मार्ट क्रिकेट, सिंगल पूरा कर लिया तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। और गेंद की मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। छोटी गेंद को सही नसीहत दे रहे हैं, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर ललचाने का प्रयास, तो 1-1 रन से पारे को चला रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी हुई है, उस पर टूट पड़े हैं, प्रहार जरूर किए हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जब आप आक्रामक अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं, एक एग्रेशन दिखता है बीच मैदान में, तो फिर आप पे किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता। वो चीज दिखी है यहां आज हिलव्यू राजौरी की। हालांकि पिछले मुकाबले में भी बेहतर शुरुआत का प्रयास था, पुनीत ने बेहतर पारी खेली थी। कल रामदयाल और सुरेश रैना कोई खास योगदान नहीं दे पाए थे शुरुआत में, तो उस चीज की कमी जरूर खली थी। पर आज के दिन वो बड़ा लक्ष्य पर खूबसूरती के साथ जो समय की डिमांड थी, जो विकेट की डिमांड थी, उसके मुताबिक यहां बल्लेबाजी की है। 67 पे 1। आखिरी गेंद का आना बाकी, 8.18 तक लेके आए हैं रिक्वायर्ड रन रेट को। 13.86 करंट रन रेट। 24-11 गेंदों से रामदयाल, अनुज कुमार 22-11 गेंदों से। शांत खीमा जीडी टाइटंस का, पर उत्साहवर्धित वातावरण। और एक और कमाल का स्ट्रोक, हस्ताक्षर बल्ले से गेंद पे ये चौका आएगा इस मौके पे, और 4 और खाते में जोड़ते हुए महजूर अली सोफी के विरुद्ध कमाल की बल्लेबाजी। निश्चित तौर पे प्रदर्शन इस समय कमाल का रहा है। वो पहले मुकाबले में थोड़ा समझे जरूर, वो परखे जरूर, और लक्ष्य के जरूर नजदीक पहुंचे थे हिलव्यू राजौरी। सूर्यांश रैना जो स्टार्ट आज दिया टीम को, हालांकि एक बेहतरीन कैच कहना चाहिए इम्तियाज लेफ्टी ने उनका पकड़ा, और वे आउट हुए थे। और रामदयाल भी पिछले मुकाबले में कोई खास योगदान नहीं दे पाए थे, पर आज के दिन कमाल की बल्लेबाजी। 28 पे 12 गेंदों से दर्शनीय स्ट्रोक, विकेट के चारों ओर मन चाहते स्ट्रोक लगाए हैं। 5 के बाद 71 पे 1, 14.20 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं महजूर अली सोफी। 2 ओवर 25 रन 1 विकेट। 12.50 इकॉनमी रहा है उनका अब तक इस पारी में। इम्तियाज लेफ्टी, महजूर अली सोफी, और उसके अलावा आमिर अजीज, 3 गेंदबाजों का चयन किया गया है। और उसके अलावा एक और गेंदबाज, चौथे गेंदबाज का भी इस्तेमाल, कुणाल थ्रॉट का इस्तेमाल, कुणाल थोराट का इस्तेमाल किया गया था। तो 4 गेंदबाज, मात्र महजूर अली सोफी को सफलता मिली है। यहां क्या एक और परिवर्तन, एक और गेंदबाज, और तेज विकल्प को चुना है एक बार फिर कप्तान ने। जो बल्लेबाजी में तेजी दिखी है, क्या उसको
विराम लगा पाएंगे गौहर रशीद, ये देखना होगा। गौहर रशीद एक बेहतरीन तेज गेंदबाज है और उस अनुभव का इस्तेमाल इस विकेट पे करना होगा। हालांकि विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल, पर एक बेहतरीन और नियंत्रण करना होगा गेंदबाजी पे, सही स्पॉट पे गेंदबाजी करनी होगी, सही लाइन और लेंथ के साथ यहां गेंदबाजी की आवश्यकता। पर जो वो आक्रमण दिखा है, वो पॉजिटिव अप्रोच, वो बॉडी लैंग्वेज, वो मानसिकता दिखी है बल्लेबाजों की, वो कमाल की। 71 पे एक छठे की शुरुआत, पहली गेंद और यहां पहली गेंद पर लीजिए स्वागत कर दिया गौहर रशीद का इस चौके से। कहां रुकने वाले अनुज कुमार और रामदयाल, ये कहानी उन्होंने प्रारंभ की है, ये कहानी लिखनी है 191 पे जाकर के। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, वो जज्बा दिखा, वो जुनून दिखा, वो उत्साह दिखा आज इस बल्लेबाजी में। 75 पे 5.1 ओवर की गेंदबाजी। अनुज कुमार 26 पे 12 गेंदों से और रामदयाल ने 28 बनाए हैं 12 गेंदों से। दोनों बल्लेबाजों ने 12-12 गेंदें खेली है, 26 और 28 ये बल्लेबाजी। और गौहर रशीद पहली गेंद पर चौका। किस प्रकार की अगली गेंद होगी? ऊपर की गेंद कोशिश जरूर करेंगे, थोड़ा उनके आंख से बाहर रखने का प्रयास जरूर होगा। निराश चेहरे थोड़े से दिखते हुए इस समय क्षेत्र रक्षण के, जहां तक जीडी टाइटंस का सवाल है। वो विकेट की तलाश जूझ रहे हैं गेंदबाज, वो विकेट मिला नहीं है। अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, खूबसूरत गेंद, सम्मान दिया वापस बॉलर की दिशा में अनुज कुमार ने। कुमार 26 पे 13 गेंदों से 75 एक विकेट पे 5.2। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। 7वां मुकाबला, दूसरी पारी, 191 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। हमारे थर्ड अंपायर शौकत मैडी, अनुभवी अंपायर, और ऑन फील्ड अंपायर रवि कुमार चौरसिया, बलविंद्र कुमार सोनी, स्कोरर स्टैटिस्टिशियन जहांगीर जौन और शहनवाज वानी। 5.2 75 एक विकेट पे। हो हवा में गेंद पर इस बार खिलाड़ी है और सीधे थमा दिया। एक आसान सा कैच वहां पर मिड ऑन के खिलाड़ी ने, कोई गलती नहीं की। अनुज को वापस लौटना पड़ेगा। गौहर रशीद ने, वो हमने पहले ही जिक्र किया था, वो अच्छे गेंदबाज हैं, सही दिशा और लंबाई पे गेंदबाजी करनी होगी। इस बार ऊपर की गेंद पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक को किया और वहां पीछे खिलाड़ी तैनात थे, उनने कोई गलती नहीं की। ये हवा में जरूर और एक आसान सा कैच थमा दिया। दूसरा विकेट मिलता हुआ यहां पर हिलव्यू राजौरी का जीडी टाइटंस को। सूर्यांश रैना पहले विकेट के रूप में इम्तियाज लेफ्टी ने कैच पकड़ा महजूर अली सोफी की गेंद पर। गौहर रशीद ने सफलता दिलाई अपने पहले ही ओवर में। कुणाल ने संभवतः कैच लपका है। बल्लेबाजी बहुत ही बेहतर हुई अब तक। रामदयाल नाबाद 28 पे 12 गेंदों से 75 पे 2। संगीत के सुर इस समय गूंजते हुए ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 7वां मुकाबला। सामने स्टैंड्स में दर्शक, कुछ निराश चेहरे, कुछ उत्साहवर्धित चेहरे। ये कहानी है इस मैच की। आज शाम एक और इतिहास, पहला मुकाबला होगा सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का, जब वो भिड़ंत करेंगे अथवास इंडिया 11 के साथ। वो तीसरा मुकाबला होगा अथवास इंडिया का। 2 मुकाबलों में जीत, 2 अंक उनके पास। वो बेहतरीन गजब का कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन क्रिकेट खेले हैं। पहला मुकाबला हारने के बाद अथवास ने जो शानदार वापसी की दूसरे मुकाबले में, तो आत्मविश्वास बड़ा होगा, हाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वो उतरेंगे। वहीं पे सुल्तान की टीम पहले मुकाबले में आज भिड़ंत करेगी। वो कांटे की टक्कर का मुकाबला। 75 पे 2। 60वें मुकाबले में एक तरफ आसिम बशीर, वसीम काचरो, नदीम डार देखेंगे, नदीम बाट देखेंगे, और वहीं पे दूसरी अगर देखा जाए तो यावर हसन, अब्दुल समद, आकिब नबी। वो क्रिकेट का इतिहास, वो क्रिकेट की कहानी आप तक जरूर पहुंचेगी शाम 6:30 बजे से। 75 पे 2 वर्तमान में 5.3 ओवर की गेंदबाजी। उमर लेफ्टी शून्य पे, रामदयाल 28 12 गेंदों से सफल ओवर। एक विकेट की खुराक इस समय मिल चुकी है। गौहर रशीद को एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ
अच्छा विवरण कराते हैं अपनी गेंदबाजी में। एक बेहतर तरीके से गेंदबाजी गौहर रशीद की, और उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहने वाला, उनका स्पेल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला, क्योंकि तेज गेंदबाजों के वो काफी ज्यादा अटैक किया है। रामदयाल, सूर्यांश शर्मा और उनके साथी जो इससे पूर्व चले गए हैं। एक और अच्छी गेंद, सिंगल मिलेगा नहीं, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 75 पे 2, एक गेंद का आना बाकी। उमर लेफ्टी, और नंबर 4 पे उमर लेफ्टी को भेजा गया है। अलग प्रकार का निर्णय कप्तान का, पर हमसे बेहतर वे जानते हैं उमर लेफ्टी एक अटैकिंग क्रिकेटर हैं, पर यहां एक साझेदारी की आवश्यकता, क्योंकि रन संख्या की अगर हम बात करें बहुत ही बेहतर 12.86 प्रति ओवर के हिसाब से आपने रन बनाए, तो यहां पे चिंतित कोई बात है नहीं, पर विकेट सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसी कई कहानियां हमने देखी हैं। शुरुआत बहुत बढ़िया मिला है पहले 10 ओवर में, फिर अगले 10 ओवर में एक के बाद एक विकेट गिरते हुए देखे। यहां पहला बैटिंग पावर प्ले समाप्त, 6 की समाप्ति, 76 पे 2। दयाल 28 पे, उमर लेफ्टी 1 पे। गौहर रशीद का पहला सफल ओवर 5 रन आए, विकेट मिला सेट बैटर का। 8.21 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाना है, यह 7वां मुकाबला इस समय। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास। ये दूसरा एडिशन, पहला एडिशन बख्शी स्टेडियम में, हालांकि दूसरा एडिशन, पर पहला एडिशन डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के उस खूबसूरत मैदान में खेला गया था। पर उस प्रतियोगिता का, उस पहले एडिशन का फाइनल मुकाबला इसी मैदान पे पिछले वर्ष खेला गया था, और ये दूसरा एडिशन इस टूर्नामेंट का। यहां पे ये 7वां मुकाबला, आरजे रफीक की आवाज गूंजती हुई। 6 के बाद 76 पे 2। 28 रामदयाल, पर यहां से वो पार्टनरशिप काफी जरूरी है, क्योंकि साझेदारी के चलते आप उस लक्ष्य तक आसानी के साथ पहुंच सकते हो, और आने वाले बल्लेबाज जो मध्य क्रम के होंगे, मिडिल ऑर्डर पे किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा, वो आजादी के साथ खेल सकते हैं। 76 पे 2। Gawar Rashid, successful over, very picked, important wicket. Fresh over and first ball. Ramdayal and Umar left in the middle, and Umar, he's a local lad here. He's promoted up the order today. He needs 14 more runs to reach 8K. Shorter format runs. As far as Crick Heroes stats are concerned, he's 14 runs away from 8K T20 runs on Crick Heroes. 2 for 27. Big shot is long off in play. No way. That's gone all the way for a maximum. It's 83 on the board. Long and huge strike. Extension of arms. Oh, take a look again. Eyes on the ball. Wide, long off area. It's gone for runs. Half a dozen. 2 for 83. This is second over from Amir Aziz. 7 of this. Consider 15 of his very first over. Solid in defense. This is gentle cricket going on. Taking calculated risk. First one that was asking to be hit, where he decided to take him on. That was need of an hour, and that needed from batter like Ramdayal, as he's on to 34 of just 14 balls. Works it away. That mid-on is out of equation now. He keeps that mid-on away. He capped it to short mid-wicket. So there is no role of mid-on at all. Cuts it out. It's 2 for 84 as we are in 7th over. Umar left. He knows Amir Aziz very well. He has played a lot of cricket alongside Amir Aziz.
in Kashmir Valley and across the valley, and even across Jammu and Kashmir. 2 for 85, JK Super Cement Red Premier League Season 2 presented by Athwas. The second match for today, that's Athwas India 11 taking on Sultan Warriors Baramulla. That's Ariel and Apish wasn't in control. Gonna be caught. And Ram Dayal is caught. It's needless to me. He was eyeing long off. He's caught at extra cover. Was he up to the pitch of the ball? Take a look. Why he decided to take him on like this? Oh, this time his bat rolled a bit. Eyeing long off. Ended at extra cover. The journey comes to an end. The stay comes to an end. He's on his way back to pavilion. The third one down. And Amir Aziz drawn important wicket in form of Ram Dayal. The newcomer walks in at Ram Dayal, telling him that take responsibility. It's on to you now. You have to take that responsibility. Step up. Paras Sharma is in at number 5. Paras comes out to bat. Ram Dayal, that experience, but the passion and the patience. Passion for the game is still there, and patience. Again, he got impatient with that big shot. He was eyeing. I think it was a good try to kill it the long off and putting more amount of pressure, at a certain amount of pressure onto the bowler. Good move and trying to launch him. It didn't work this time. Sometimes it works, sometimes it backfired likewise. Sam happened with the batter there. We're going to be in over number 8. 7 overs done. 3 for 85. Required rate isn't a big concern. It's 8.15. The current rate is 12.14. All guns blazing. First 2 overs, which are 32 coming. They scored 32 in 2 overs. .53 coming of next 5 overs. There is a huge difference. That's what cricket is all about. And look, there is a difference when field restrictions were on. First 2 overs yielded 32, and for next 4 overs there was again field restrictions on. As you know that it's a 6 over mandatory power play. And talking about that change of aggression or the change in intent, trying to adapt and adjust to the conditions here, the next 5 overs yielded 52 or 53. Correction comes in 53 coming in next 5 overs, and it yielded 32 in just 2 overs. And look, that's what cricket is all about. The well beginners hop done. It's been well said. A good start, a prolific one, and they put on 32 in just 2 overs, and that's why they are now 85. That 32 of 2 overs, that forced it, and that pushed the batters to some extent. Rashid removed one of the batter in his very first over. He's also full of talent, talking about the skills, talking about the different kind of balls, the knuckle ball, the back of the hand sliver. He has got that in his kitty. Can be pocketful at times. The brother of Fazil Rashid, who was part of JKC's side a year back, but expecting that he will make a comeback again, coming back to the game. 3 for 86. We are in 8th over. So there is that love for the game. The spirit of the game is alive in the family, and brother is playing, he's playing. They are looking forward to put forward a statement. That's gone fine. The man at short cover can't think of stopping that. So he let it flow, and the man from sweep of cover boundary comes across, but that's gone past. And look at the beauty. Comes onto the front foot. Paras Sharma straight away. First signs of aggression and intent as he comes down the track. There wasn't too much bounce and offer, but he connected it
way outside crease and beating the man either side of the man, to the left of the man at a short cover, the catching cover. 90 for 3. Paras. You know these things very well. A little gentle dab to offside. Trying to catch a batter short of his ground. Didn't go their way, didn't work in the end. It's bright sunshine out here. The temperature is 30 degree. And the two teams, they're sweating it out in the middle, absorbing all that heat and humid climate. Some of the guys like Thorat Abu Talib, and one more lad, that is Kale. They know how to play under these kind of situations, under certain circumstances, 30 or 30 plus. Even they played cricket under 40 degrees and even 40 plus in Karnataka area. And in Pune, gentle dab again. Partner isn't responding on my left. He knows that it is going to be a risk. And we can't risk one more wicket here, as they lost the momentum yesterday. They were falling like pack of cards the other day. To avoid that, that was a nightmarish evening. So to avoid that, he's trying to stay away from those blows. They don't want that momentum go other way. They don't want to see the momentum shifting. It doesn't take too much time to shift the other way. We saw that Anuj Kumar in today's game who bowled 1 over and he yielded 22. And at that stage, batters thought that, they understood it is the high time to improve a game and to put feet on accelerator. It's the high time. Now it's ours. It's in our court now. The ball is in our court and we have to deliver. And they did that in style and finishing on 190 after 20 overs. Now in response, it was a good start. It was a perfect one, as we saw the way batters batted. In first 6 overs, they gone really well after the bowlers. They were middling the ball. And take a look, this is their dugout. These are the pictures coming from their dugout. Looking hopeful, as they need a win here to boost their confidence, to back themselves with one good performance. Little aerial and it's in the gap too. Great shot of the batter, Bhuma lefty. He's going to get closer to that mark of 8K runs. How many behind? Oh, good shot again. Not trying to overhit. Just place that one in the gap. He's on to 8. 7 more needed. Amir Aziz. What he has to do now. That one, it's again in the gap. There is a fumble. There is a misfield. And there is a joy in the dugout. They're whistling at the moment. That excitement, the joy is going to come. Is going to surround them. And look at execution. Oh, wonderful adjustment there from batter. Not keeping it down. Goes with the full flow. And not looking back. 100 up for Hillview Rajori. And bringing up the 100 in 9th over is an achievement. 2 boundaries on 2 success balls. Amir Aziz need to mend his lines here. He's got no one at short mid wicket. He's just 3 runs behind now. On to 12 of 8 of 9 balls. And that one goes for that shot. There is a man. Oh, he's going to elude him all the way for a 6. And with that 6, he's going to bring up his 8K runs
in T20 cricket, and congratulations from our side. It's 8K runs for Umar lefty on Crick Heroes. Look at that sweep shot. Oh, little imbalanced in the end, but the ball flies. Look, they're enjoying in the dugout, in the grandstand. Somebody took that. Good goal. Nice try. Holding on to the ball beyond the boundary line. Not within the boundary line, but it's beyond the boundary line. Some catching practice surely for that person there. Now he tried to bowl it wide up the off and is signalled as a wide. And Imtiaz lefty needs 1 wicket to complete 900 wickets on Crick Heroes. That's another exciting achievement. That's going to be another one spare. That one. There is going to be the chance. Oh, he dropped. You can't believe. Even I can't believe. Raza leg player dropped. A dolly of a catch gone down. Raza getting in possession. You can't believe. Even I can't believe. Raza is in disbelief. He must be kicking. He's disgusted. And Amir Aziz nearly provided. Look at that. Trying to reverse cup. All of a sudden ball just gone through. It popped out and Umar lefty handed his wicket almost. But that's gone down. The chance gone down. He's lucky. He survived. Scare. Lifeline for Umar lefty. 108 for 3 after 9 overs. Another eventful over. Another good over. And Amir Aziz gone for 40 of his 3 overs. It should have been less than 40 of his 3 overs with 2 wickets under his belt. But that catch gone down, and Raza, you can see that. Oh, look at his face at the moment. Raza is feeling that it's a big mistake. It's a blunder. Huge mistake. It can be the game-changing moment as he lifted it up straight away. And they're going to be some of the big achievements coming up in today's game. One is already done. That is Umar lefty. Reached his milestone in some style. Getting those 8K runs. And there are other guys who are also looking forward to achieve something special in today's game. 108 for 3 after 9 overs. We shall come to that again. And it's going to be Raza to roll his wrist now. The required rate is 7.55. Only thing they need is to stick to basics. There is no need to overhit. There is no need to go hammer and talk and downtown time and again. You have your time. And it's 108 for 3. Look, the required rate isn't a concern now. And if they lose this one, it's going to be their mistake. Paras driven that one wide of the man at mid off, and there is a man at boundary line. Raza has picked up 639 wickets, economy of 7.10. The economy isn't good to some extent, but looking at his figure, 6 for 13 economy, so that means he is going to concede. If you control him and if you can read him well, you can score runs against Raza, but sometimes Raza can be difficult to face and control at times. But looking at the stats, he's 1 wicket away. And he's how many sixes away? 4 sixes away. And then terrific. 300 catches. How many? He needs 3 more catches. He took 1 today, I think. Now he's just 2 catches away. And top notch. 200 catches in limited over matches. For which? Who's this? It's Wasim Raza. He needs 2 more. Would have been 1 away, but he put down that. Then there are so many stats coming up. We shall share it with you guys. So stay tuned and connected. Don't go anywhere. Worked away. Resurrection is again underway. But Umar lefty is playing his part here with that cameo. The handy cameo coming into play. Paras Sharma and Umar lefty. With such a temperature, playing under the bright sunshine isn't easy to adjust. The way these 2 batters are trying to adapt, that's so nice. And you know that Raza, he has that experience. And talking of his partner,
That's going to be, that is Paras, and Paras has played in 40-degree temperature, and that's a big shot. Swept. And that's gone onto the rooftop. It's a mighty hit. It's all the way for a maximum. 6 more. And with that 6, with that there is addition to the tally. And Paras with that long stride forward. Oh, what a connection. Swept. And it's gone off. It took off in no time. In a blink of an eye, it flies away, away. Take a look again. That flown all the way. It took off. It's gone off all the way. 112. It should be 118. Well, we lost the ball. TV umpire and that fourth umpire is going to walk onto the field with the briefcase. 79 needed from 62. What do you make of it? What is the difference? To me, it was that intent wasn't there. That was missing. And the other thing, those wickets which were falling in a kind of a cluster, that made the huge difference. But today, whosoever came out to bat, they're trying to hold things tight and together. बिल्कुल सही आपने जिक्र किया, क्योंकि वो पिछले मुकाबले में जो कमी दिखी थी उसको आज बेहतर किया है. शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन रहा है आज हिलव्यू राजौरी का. 118 पे 3 यहाँ रन संख्या. 191 बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए. पारस शर्मा 15 पे, उमर लेफ्टी 21 पे. बात हो रही थी और उन गलतियों को आज बेहतर किया. उन गलतियों से सीख लेकर के आज उतरे हैं इस मुकाबले में हिलव्यू राजौरी. पर वो इंटेंट क्लियर दिखा है. और जब कभी भी विकेट गिरे हैं, पर वो जो रन गति थी उसको गिरने नहीं दिया है. जो करंट रन रेट है वो कमाल की, बहुत ही बेहतरीन. और ये अदा का प्रहार होता है, इसे व्यवहार की जरूरत नहीं होती. 118 पे 3. और बात हो रही थी कि बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी की है. वो मोमेंटम जो शुरुआत से बना उसको कभी भी यहाँ गवाया नहीं है हिलव्यू राजौरी ने. और यही कारण है कि इस समय 10 ओवर के आसपास 118 रन बना लिए, 7.18 प्रति ओवर के हिसाब से. पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास 7 विकेट सुरक्षित है, तो ये एक एज जरूर रहेगा यहाँ हिलव्यू राजौरी का. ये दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं. जीत यहाँ पर अवश्य है, क्योंकि पिछला मुकाबला हार करके आए हैं. इस मुकाबले में जीत अर्जित. पर अगर जीडी टाइटंस की बात करें, अपना पहला मुकाबला है, कोशिश जरूर होगी शुरुआत जीत से की जाए. और यहाँ जिस प्रकार से अब तक क्रिकेट खेली है हिलव्यू राजौरी, वो कमाल का प्रदर्शन. और हर एक डिपार्टमेंट में आउट क्लास कर दिया है विपक्ष को, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो. और शुरुआत में सूर्यांश रैना, उसके अलावा जो अन्य दीगर खिलाड़ी थे, रामदयाल, बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रदर्शन रहा उनका. एक आक्रमण जरूर किया, वो बेहतर आक्रमण रहा और उस आक्रमण के चलते 118 तक टीम पहुंच पाई है. वसीम रजा जिन्होंने 10 रन अभी तक खर्चे हैं, मात्र 1 ओवर की अभी तक उन्होंने गेंदबाजी की है. और उनके विरुद्ध देखा जाए तो एक शानदार योगदान रहने वाला है उनका. एक बेहतरीन प्रदर्शन रहने वाला है, कमाल का प्रदर्शन रहने वाला है. और ये प्रदर्शन किस प्रकार का रहेगा, ये देखने वाली बात. 118 for 3, and this we have seen that Raza gone for 10 in his very first over. But catches are always important. You know that catching skills are also important. You have to be at your level best. Thank you very much. The business part, it's 118 for 3. Well, Nazir, you can see at the scorecard. And that catch was important. That catch gone down, and now this is going to turn the tide, and it can change the momentum. It shifted already, and take a look again. They are now 73 runs behind. Oh, that's gone fine. Down towards. Oh, there is a good field. He does well. He does very well to stop the ball. Look at Paras. He was eyeing a big shot. It goes down towards wide up mid on. And with that brace, it's 10 done, halfway mark. Halfway mark, half the job is done. Half needs to be done, isn't? 1-2-0 for 3. 71 away from 60 balls with 7 of the batters in kitty. GD Titans, as you rightly mentioned earlier on, they need a miracle to prevail.
If we look at the score ticker, it looks flat, bit flat, but you know that cricket, it can change its colors. One or two tight overs can make it again interesting one, or the intriguing, where you can't say anything. So let's see how things will unfold and how it will look like in the coming overs. In the next few overs, 71 needed of 60 balls, 10 overs. They need one or two wickets in quick succession. On the other side, this is up to the two batters. They need to keep going and look at the pigeons on that portion. Camera person capturing these moments. He's 1 wicket away from 900 wickets on Crick Heroes. Imtiaz lefty is given the ball again. His first over that gone for 16. I think with the little older ball, he's going to be more effective with those cutters and he can reverse the ball in between. 59 से 70, 121 पे 3. पारस शर्मा सामने है. 17 पे उमर लेफ्टी ने 21 बनाए हैं. और इम्तियाज लेफ्टी की अगर हम बात करें, अथवा इम्तियाज लेफ्टी इसमें गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार अच्छा स्ट्रोक, खूबसूरत फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन. धरतीश गोनी द्वारा, और निश्चित तौर पे ये रन जरूर बचाया. और ये चीज़ें ज़रूरी है इस समय कि रन गति पे अंकुश लगाना है, तो फिर आपको बेहतर फील्डिंग करनी होगी. और पास में खेल करके दौड़ पड़े तेजी के साथ. सिंगल मिल जाएगा. हाँ, दोनों बल्लेबाजों को 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ रन संख्या 121 से बढ़कर 122 पे 3. 11वें ओवर में 69 चाहिए 57 गेंदों से. इम्तियाज लेफ्टी का ये दूसरा ओवर. 18 रन अब तक उन्होंने खर्चे हैं. सूर्यांश रायना ने 20 बनाए, रामदयाल ने 35, अनुज कुमार ने 26, लेफ्टी 21 पे. वहीं पे गेंदबाजी की बात करें, इम्तियाज लेफ्टी से इससे पूर्व 1 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं. 16 रन उन्होंने खर्चे हैं. आमिर अजीज ने 3 में 40, 1 विकेट. महजूर अली सोफी ने 2 में 25. एक और बेहतर फील्डिंग और सिंगल जरूर. महजूर अली ने 2 ओवर में 25, 1 विकेट. कुणाल थोराट ने 1 ओवर में 14, विकेट नहीं मिला. गौहर रशीद ने 2 में 12, 1 विकेट. इकोनॉमी बहुत बढ़िया 6 की. वसीम रजा ने 10 रन दिए हैं और उन्हें एक विकेट तो मिला नहीं है. पहला विकेट 32 पे सूर्यांश रैना, दूसरा 75 अनुज कुमार, तीसरा 85 रामदयाल. और अब तक बेहतर बल्लेबाजी की है, शानदार प्रदर्शन किया है इन बल्लेबाजों ने. 124 पे 3, 10.5 ओवर की गेंदबाजी. 11वां ओवर, 55 गेंदें, 67 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए हिलव्यू राजौरी को. विकेट चाहिए जीडी टाइटंस को. और इस बार तिरछे बल्ले के साथ बल्ले का मुंह खोलते हुए दिशा दे दी. फील्डर तैनात थे. रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. ओवर की समाप्ति 9 समाप्त, 9 आने बाकी, 11 समाप्त. 124 पे 3, 54 गेंदों से 67 चाहिए मैच जीतने के लिए. ये साझेदारी उमर लेफ्टी और पारस शर्मा के बीच बहुत ही बेहतर. वो कार्य निभाया जरूर है, वो कार्य किया जरूर है जिसकी आवश्यकता थी हिलव्यू राजौरी को. 7वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास. और आज शाम 6:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे. गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष, वो बड़ा मुकाबला, वो क्रिकेट का घमासान. एक तरफ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और दूसरी तरफ अथवास इंडिया 11. तो जुड़ना ना भूलिएगा शाम 6:30 बजे दिन रात्रि के उस मुकाबले में. वो कहीं इतिहास लिखे जाएंगे, वो कहानियां दोहराई जाएंगी. वो गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष जरूर दिखेगा. वो क्रिकेट का जुनून बख्शी स्टेडियम में आज की शाम अपने श्रोताओं के नाम. 67 चाहिए 54 गेंदों से. 124 पे 3, 11 समाप्त. 12वें की शुरुआत. कुणाल का एक बार फिर इस्तेमाल किया गया गैप में. पीछे फील्डर, प्रयास असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर. चौका मिलता हुआ 4 और खाते में. 124 से बढ़कर 128 कुल रन संख्या जीडी टाइटंस के विरुद्ध ग्लोबल डाडू टाइटंस. बेहतरीन स्ट्रोक था, खूबसूरत गैप में प्लेसमेंट बहुत बढ़िया. और 4 रन. वसीम रजा ने हर संभव प्रयास किया था पर नहीं पहुंच पाए. गेंद की गति उनसे कई तेज थी. 63 चाहिए 53 गेंदों से. कुणाल तिरछे रन आपके साथ बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं. ऑन साइड में एक बार फिर बेहतर स्ट्रोक है. पीछे फील्डर जरूर.
सिंगल जरूर मिलेगा। अच्छी मानसिकता और अच्छी बल्लेबाजी। सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। अतिरिक्त दबाव से अपने आप को बिल्कुल दूर रखा है बल्लेबाजों ने और उस कोशिश में अभी तक सफल भी हुए हैं उमर लेफ्टी और पारस शर्मा। 23 पे उमर लेफ्टी, पारस शर्मा 24 पे। और साथ साथ दोनों बल्लेबाज इस पारी को आगे बढ़ा रहे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 52 गेंदों से 62, 191 का लक्ष्य मिला है और वो तेज तरार शुरुआत आज सूर्यांश रैना और रामदयाल ने। कमाल की पारी। उमर लेफ्टी 23 पे सामने, 62 रनों की आवश्यकता 52 गेंदों से। कुणाल और एक बार फिर खूब जोरते के साथ गेंद सीधे स्टैंड्स में, एक और छक्का। ये रन संख्या भी 135 तक पहुंच चुके हैं। खूबसूरत और बेहतरीन स्ट्रोक। उमर लेफ्टी आज गजब के फॉर्म में दिखे हैं। वो इंटेंट दिखा है, वो पॉजिटिव अप्रोच दिखा है, वो पॉजिटिव माइंडसेट दिखा है, वो आक्रमण दिखा है उनकी शैली में। कमाल का प्रदर्शन हिलव्यू राजौरी के लिए। 56 चाहिए 51 गेंदों से, 135 पे 3। 12वां ओवर। एक और बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक, पीछे फील्डर, सिंगल जरूर मिल जाएगा। और निडर होकर के इस समय बल्लेबाजी हो रही है, वो किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है उमर लेफ्टी और पारस शर्मा पे। 11.74 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम। रिक्वायर्ड रन रेट 6.59 का मात्र। अब तक की बात करें 12 रन अभी तक का आ चुके हैं इस ओवर में। सामने पारस शर्मा और स्टेप आउट करके बाहर निकले जरूर थे, पर पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, भाग्य ने साथ दिया। कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 5 गेंदें और इस ओवर में 5 गेंदों से 12 रन आ चुके हैं। 55 चाहिए 49 गेंदों से। अंतिम गेंद, एक और अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, स्टंप्स पे खेला जरूर। फील्ड हुई गेंद, रन संख्या में कोई भी। अच्छा और शानदार प्रदर्शन, पर यह मुकाबला बहुत ही बेहतरीन। 7 विकेट सुरक्षित अभी भी। 8 ओवर का आना बाकी। 48 गेंदों से 55 की आवश्यकता। पारस शर्मा 24 पे, उमर लेफ्टी 30 पे, 136 पे 3। There is a gap of 7 between number of balls and runs prior to this over. That was a little better, but now it looks like that it eased up a bit to great extent. Just 7, the gap between number of runs and balls. Thorot 2 overs, none for 26. Lefty 2 overs, none for 20. That's aerial, he's taken, and that marks the completion of 900 wickets on Cricket Heroes for Imtiaz Lefty. Congratulations from JK Sports Time side for achieving this milestone. It's Umar Lefty got to go. Umar earlier on achieved that mark in today's game. Now it's Imtiaz Lefty. Oh, he's picked up 900 wickets on Cricket Heroes. What an achievement. He's caught at straightish point area, little bit deep area, deepish point area, and it's wicket down here. 136 for 4, and yeah, of course, congratulations from our side. 900 wickets. Quite some achievement. Wow, what a bowler. Absolutely right. $55 away from 47 balls. And that brings Puneet Kumar. Puneet is in. And the second game for today, it's going to be Sultan Warriors Baramulla taking on Atwas India 11. And I still remember and really love that word, Atwas. And in Kashmiri, we call it Atas Atwas together. And it's 55 needed from 47 balls. And Nazir calls it Ekta mein bal hai. Yakjati aur Ekta. Togetherness. Equity. Going hand in hand. 55 away from 47 balls. Puneet Kumar is the newcomer. Is the new one to join his partner. He's got 3,819 runs. Averaging 26. But the strike rate is a good thing. 139. This is another aspect of the game. This important thing in T20 in shorter format.
And the very first ball is going to run down, is going to roll past, is going to roll past. It wins the race in the end. 140 for 4. They are 51 away from 46 balls. And take a look again. Edishwan, he was trying to drive the ball. He invites him to drive the ball, lures him into it. And the Edishwan, the thick edge goes past. That's 4. That's what Paras and team require at the moment. They need this. They're getting sufficient amount of runs. Good shot again in the gap. The outfield is so quick here. Will he get to the ball? Will he get to the ball? He makes it to the ball. The running between the wickets is so nice. They're quick between the wickets. Puneet is gaining a lot of weight. He has gained a lot of weight over the past couple of months. And Paras is, look at Paras, he's thinner bodied. $143 for the loss of 4. 48. Away from 45 balls. Just a partnership needed here to kill the chase. And they do have the ability to kill the chase. Paras wanted a single and is denied. Imtiaz lefty completed 900 wickets. Into his third over, Paras 24 of 18. He decided to come down the track. He was eyeing to find that either side of the man at long off, but there is Majorally Sophie who took care of the rest. 3 runs coming on other. It's 144 for 4. It's 144 for the loss of 4. Interesting figures. Puneet guided nicely. There is a fumble. It's going to yield more than 1 here. Who knows? It might run down to the boundary. No, it's top, but he took the pace of that shot. He's going to settle for 2. That marks the completion of over number 13. We're done with the 13th one here. 45 away from 7 overs with 6 of the batters in kitty. It's their game to lose. They have 7, should win this one. The pair in the middle need to bat deep, prolong the batsmanship, keep going, and keep eyes on the scorecard. The current rate is 11.23. That is huge. That's big at the moment. They're going after the bowlers. There is no look back. Unstoppable action continues. The batting unit, everyone fight for their side. All are looking in good colors today. The form is there. The temperament, the class, and that resilience is quite visible at the moment. It's pretty visible. 45 away from 42 balls. J.K. Super Simen, Red Premier League Season 2, game number 7 underway. The 8th one is coming up this evening. It's going to be Samad versus Nadeem Dar, the 2 skippers of their teams. Oh, look, he was trying to guide it. Glided down to the third man, is beaten. 45 behind from 40. 146 for 4. Not a big task. Bat sensibly. 1s or 2s will help their side. There is no need to do this. Trying to improvise and brings in a reverse sweep. Look, there is protection. 1, 2 men behind square on the off, and there is a straightish point. Now Puneet telling him there is no need to do all this, as we're very much on top here. We're holding the upper hand through the line, and that single. They're 44 to get from 39 balls.
147, 39 से 44 यह आंकड़ा। पुनीत कुमार 9 पे। वसीम रजा का ये दूसरा ओवर, 13 रन उन्होंने अभी तक खर्चे हैं। इस ओवर में 3 गेंदों से 1 रन, अच्छा ओवर घटा है। गेंदों रनों की बात करें तो आंकड़े में उतना ज्यादा अंतर है नहीं, 44 रन चाहिए 39 गेंदों से। खेला जरूर थोड़ा फाइन के लिए जरूर है, एक सिंगल जरूर मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ अब रन संख्या 148 पे। 43 चाहिए 38 गेंदों से। पारस शर्मा 26 पे, पुनीत कुमार 10 पे। 6.79 रिक्वायर्ड रन रेट। पर आज क्रिकेट बहुत बेहतर खेली है। वसीम रजा के विरुद्ध और सामने खेला जरूर, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आकर के गेंद को फीड करते, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। जी टाइटंस की टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 37 से 42, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 6 विकेट सुरक्षित हैं। अंतिम गेंद का आना बाकी इस ओवर में। वसीम रजा इस बार छोटी गेंद खूबसूरती के साथ, सही कनेक्शन, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, स्टैंड्स में ये छक्का। पुनीत अब बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, क्या बेहतरीन बल्लेबाज है। पिछले मुकाबले में भी आक्रमण उन्होंने किया था, वो विस्फोट किया था। जी हाँ, अगर गेंद के साथ पुनीत की प्रीत देखी जाए तो कमाल की निभाई है। संगीत छेड़ा है जब गेंद को स्टैंड से बाहर फेंका। क्या शानदार बल्लेबाजी। 14 समाप्ति 155 पे 4, 36 से 36। दिलचस्प आंकड़ा, और गेंदें 36 बची है, रन भी 36 चाहिए। तो रन बॉल यहां से आसानी के साथ इस मुकाबले को पार किया जा सकता है, और कोशिश भी जरूर होगी। यहां इन बल्लेबाजों की कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सहजता के साथ इस मुकाबले के अंत तक पहुंच सकते हैं। पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। डाउन द ट्रैक निकले जरूर, स्टंप से बाहर और क्रीज से बाहर, स्टंप्स पे खेले और स्टंप आउट होकर के वापस लौट रहे हैं पारस शर्मा। 27 बनाए, आउट होकर मैदान से बाहर। इम्तियाज लेफ्टी को मिलने वाली एक और सफलता। ये 5वां विकेट, काफी बाहर थे क्रीज से। डाउन द ट्रैक निकले जरूर थे पर वापस नहीं लौट पाए। अच्छी गेंद ऑफ से बाहर फेंकी चतुराई के साथ इम्तियाज लेफ्टी ने, पहुंचे नहीं और स्टंप्स भी खेल दिए वहां पर विकेट कीपर ने। एक और विकेट का पतन होता हुआ ये 5वां विकेट गंवाया है 155 पे, और 35 गेंदों से 36 की आवश्यकता। पुनीत कुमार बीच मैदान में 5 गेंदों से 16 रन और 250 के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट। 35 से 36 ये है इक्वेशन, ये है आंकड़ा इस मुकाबले में। यह 7वां मुकाबला। देखा जाए तो ऑन फील्ड अंपायर्स रवि कुमार चौरसिया, बलविंद्र कुमार सोनी, थर्ड अंपायर शौकत मैडी, स्कोरर जहांगीर जॉन, स्टैटिस्टिशियन शहनवाज वानी और हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर शौकत बनिया। पूरी टीम का एफर्ट। JK Super Cement Red Premier League 2025 second edition presented by Athwas। और ये लीग है खास, और बेहतरीन प्रदर्शन, कुछ बेहतरीन आक्रमण। एक और मुकाबला इसकी समाप्ति के बाद, इस मुकाबले की समाप्ति के बाद शाम 6:30 बजे लाइव एक्शन में जुड़ना ना भूलिएगा। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का पहला मुकाबला इस प्रतियोगिता में, और दूसरी तरफ अथवास इंडिया की टीम जो 2 मुकाबले खेल चुके हैं, एक में जीत एक में हार, 2 अंक उनके, और नए उत्साह के साथ वो पिछले मुकाबले की जीत का जश्न और जीत की खुशी एक बार फिर नए उत्साह के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ वो चुनौती रखने जा रहे हैं और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के सामने। और किस प्रकार का उस चुनौती का स्वीकारण होगा या आज की शाम अपने श्रोताओं के नाम वो क्रिकेट का घमासान आज के शाम देखने को मिलेगा। फिलहाल 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ ही 156 5 विकेट पे 14.2 34
गेंदे और 35 रनों की आवश्यकता। 35 behind from 34 balls. Puneet Kumar under 16 of 5 balls. Aggression from Puneet, intent, attitude, and he's scanning that confidence. The levels are very high. He's enjoying his moments in the middle. Wide of the off. Imtiaz lefty. He's in his fourth and the final over of his quota. Picking up 2. And he crossed that milestone today. He reached that. He touched that 900 wickets on Cricket Heroes. He's past that now, 901. Puneet is a bit lucky there again. Nice collection from wicketkeeper. "35 runs behind Gaurav Chaudhary and Puneet Kumar. The spirits are pretty high at the moment. They know they are very much in control. Global Dadoo need a miracle to come back, to bounce back and prevail in this one. They need cluster of wickets in pockets, in bundles. They need 2-3 at least in quick succession. 34 behind. Gaurav has got Puneet. Puneet has got the strike rate of more than 200. That's a big shot. It's going to land safe. Rajouri is a little lazy to operate there. You got to be on your toes when you are to defend 33 from 30 balls. You can't afford any laps. You have to try and draw up runs. Lefty is done with his quota, 4-2 for 33. And take a look, this is their dugout and Paras is right now busy. Ramdayal is little off color at the moment. He's looking concerned. He isn't happy with Puneet Paras Sharma there. Look, this is going on Nazir. He's telling him, never expected from you. You're a match winner. You got that experience. You have been playing alongside me. But what you have done? There's a heated debate going on. The arguments are going on as Ramdayal is telling him, I wasn't expecting a batter of your stature. Thrown your wicket away when we needed you badly in the middle. The captain knows the worth of his wicket as he thrown his wicket away. 33 from 30 balls, 5 overs. Are going to come Amir Aziz, 3 overs, 1 for 40. Left arm spinner. Gaurav could be in trouble here. Will he make it to the ball? Is taken. And Gaurav Chaudhary is gone. Wicket number 6 down. And the few spectators in the grandstand are whistling as global titans from nowhere getting rid of Gaurav Chaudhary. And take a look again what he was trying to do. It was flighted ball on offer and thrown his bat away one-handed, and is nicely held. Good catch. A running catch isn't easy, but he made it look so easy. As 6th one is down, look, he's telling him that he dropped it, he flighted it, he given loop and air to the ball. I thought it will come at a good pace, but it took some time to arrive. It was early into the shot, and that brings, I think it's Cole in at number 8. Let's see. Is it Rohan Cole? Scorer will confirm. To me, it's Rohan Cole. It is Rohan Cole in at number 8. They are 33 runs behind from 29 balls. Global Dadoo Titans are just 4 wickets away. Nazir, is there any twist? Cricket once again changing its colours.
Prior to 2, it looked like that it should be easy one, and it is Rohan Cole in at number 8. What Garo did and Paras did, captain wasn't expecting. And the team management is feeling that certain amount of pressure right now as Rohan comes out to bat. Amir Aziz picked up second one. 33 needed. Not a run there. It's a dot ball. It's a golden dot. It's a great dot delivery. 28. Balls 33 needed. Rohan on strike again. This time good shot. Nicely worked away. He's up the mark, and that will mean Puneet is going to be on charge on strike here. And Puneet will try to take his chances. He would love to carry on and continue. The way we saw in the power play in the middle overs, he would love to carry on with the same pace, because they're not going to look for that final over. They want to finish it prior to that. Who knows, it can change its colors. It can be difficult at the fag end. There are 4 wickets away global due to Titans. Titans need 4. And Hillview are 32 behind. Cricket, the game of glorious uncertainties. 32 behind from 27. That's Ariel. There is a man. Oh, he's a bit lucky there. It dropped short of a fielder there. For a while I thought he's going to be in business. But he's okay, he's fine there. No problem at all. It dropped well short of fielder there. 31 from 26. 31 चाहिए, 26 गेंदों का आना बाकी। आमिर अजीज इस बार फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, गेंद की पिच तक पहुंचते हुए सामने फील्डर की ओर, गेंदबाज की ओर खेले। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 160 पे 6, कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास नहीं होगा यहाँ पर रोहन कोल और पुनीत कुमार का। कुमार 18 पे, रोहन सामने एक नजदीकी स्लिप तैनात कर दी गई है। खराब गेंद है, खूबसूरती के साथ इसको सीधे यहाँ स्टैंड्स में जा भेजा है। एक और छक्का रोहन कोल के बल्ले से निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार प्रदर्शन। जैसे देखा लेग स्टंप की ओर अतिरिक्त उछाल है गेंद में, और खूबसूरती के साथ इस गेंद को उठा करके स्टैंड्स में जा भेजा आमिर अजीज के विरुद्ध। देख लीजिए उनकी रेंज में, और ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई भी। अच्छी हरकत करते हुए यहाँ रोहन कॉल और उनके साथी अपनी टीम हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब के लिए जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास। 7वां मुकाबला 24 से 25, 166 पे 6, 16 समाप्त, 4 ओवर का आना बाकी। इसके बाद एक और क्रिकेट का घमासान। 166, और ये खूबसूरत दृश्य है। रोहन 7 पे 4 गेंदों से, पुनीत कुमार ने 18 बनाए हैं। एक 166 पे 6, 16 ओवर की गेंदबाजी, 4 ओवर का आना बाकी। गौहर रशीद का इस्तेमाल संभवतः गेंदबाजी में अब किया जाएगा। आमिर अजीज 4 ओवर 48 रन, 2 विकेट, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन खर्चे हैं। गौहर रशीद की बात करें, आमिर अजीज की बात करें, गौहर रशीद अब एक और ओवर लेकर के 4 ओवर बचे हैं। 24 से 25 यह है इक्वेशन इस मुकाबले में। ये 7वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, ऐतिहासिक मैदान में। एक और मुकाबला आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मुकाबले की समाप्ति के बाद वो मुकाबला 8वां इस टूर्नामेंट का मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की शुरुआत हो रही है इस प्रतियोगिता में आज अथवास इंडिया 11 के साथ, जो उनका तीसरा मुकाबला होगा। 2 मुकाबलों में 1 जीत 1 हार के साथ 2 अंक लेकर के वो इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं। और आज सुल्तान के साथ उनका मुकाबला, हालांकि सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का पहला मुकाबला, वो बेहतरीन मुकाबला आज की शाम आप तक जरूर पहुंचेगा। गौहर रशीद 24 गेंदों से 25 रनों की आवश्यकता पुनीत के लिए। अच्छी गेंद थी पर ऑन साइड में खेला। बहुत ही बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी है पुनीत कुमार। 1 रन यहां पर बटोर लिया। 23 गेंदों से 24 रनों की आवश्यकता। उतना ज्यादा अंतर है नहीं, मात्र 1 रन अधिकतम है गेंदों की अगर हम बात करें। 23 गेंदें, 24 रनों की आवश्यकता, 4 विकेट सुरक्षित। 167 पे 6 यहां विकेट चाहिए पुनीत का।
कोशिश जरूर होगी रोहन कोल और पुनीत यहाँ बेहतर तरीके से इस पारी को फिनिश करना चाहेंगे, आवश्यकता भी है। 23 गेंदों से 24 रनों की आवश्यकता। गौहर रशीद फिर लेग स्टंप पर, फिर खराब गेंद और गैप में गेंद गई है, पीछे फील्डर है। आमिर अजीज ने खूबसूरत फुटबॉल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए गेंद को रोका जरूर, पर कुछ रन जरूर बटोरे यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। 22 गेंदों से 22 रनों की आवश्यकता, ये आंकड़े बराबरी पे। 22 चाहिए, 22 गेंदों का आना बाकी। हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब धीरे धीरे से जीत की ओर अग्रसर होते हुए, पर क्या यहां सुनिश्चित कर पाएगी? यह पहली जीत होगी 2 मुकाबलों में हिलव्यू राजौरी की। ऑफ साइड में 1 रन चहलकदमी करते हुए सिंगल डबल से भी आसानी के साथ इस मुकाबले को जीता जा सकता है। और जानते हैं ये मानसिकता दोनों बल्लेबाजों की, कोई अतिरिक्त दबाव नहीं लेना है, कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना है, हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं दिखानी है, क्योंकि 1-1 रन से आप इस पारी को अंत तक पहुंचा सकते हैं। 21 गेंदों से 21 की आवश्यकता। पुनीत कुमार 19 पे, तो क्या शानदार पारी पिछले मुकाबले में, पर वो पारी उनकी टीम के काम नहीं आई थी, वो हारे थे वो मुकाबला, पर आज जीत की ओर एक और बेहतर और शानदार ये दौड़ लगा करके रन पूरा किया। मानसिकता बहुत ही बेहतरीन। 1 रन और 20 गेंदों से 20 रन। राने बॉल यहां से हिलव्यू राजौरी पहली जीत की ओर, क्या यहां से रोक पाएगी टीम जीडी टाइटंस? ग्लोबल डैडू टाइटंस की टीम का पहला मुकाबला है इस टूर्नामेंट में, 7वां मुकाबला। गवर्शी 2.4 ओवर 17 रन, अनुशासन 1 विकेट, रन ज्यादा उन्हें खर्चे नहीं है, पर विकेट की तलाश है। यह खराब गेंद थी, लेग स्टंप की शेप में कलाइयों के सहारे खेला जरूर, गेंद चली गई फ्लिक करते हुए, उसको सीमा रेखा से बाहर निकाल दिया 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां पे। जितना आप नजदीक पहुंचेंगे उतना दबाव और भी विपक्ष पे बढ़ता चला जाएगा। ये 4 रन और खाते में जुड़ते हुए, और इस चौका के साथ ही रन संख्या अब जाकर के पहुंच गई है हिलव्यू राजौरी की 175। 19 गेंदों से 16 रनों की आवश्यकता इस मैच को अपने नाम करने के लिए। हिलव्यू राजौरी वो पहली जीत की तलाश में, और अंततः वो जीत का मजा चखने जा रही है हिलव्यू राजौरी की टीम इस दूसरे मुकाबले में इस टूर्नामेंट के, जो उनका दूसरा मुकाबला है। एक और रन मिलता हुआ 176 पे 6, 17 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर बचे हैं, 15 रन चाहिए, 18 गेंदें, 15 रनों की आवश्यकता। पुनीत 20, रोहन कोल 15। Flatten at 15 away from 18 with 4 wickets in kitty. 1 power pack over needed for both the teams. 1 big over, and they're going to be over the line. And 1 tight over from the bowler will make it a good contest here. I mean, 1 or 2 wickets in an over will make it a tricky chase at the fag end. But don't think so, as Puneet Kumar and Rohan Cole, they know that they have a responsibility. They know very well how to chase these 15 runs from 3 overs. Now it's almost their game. They have 4 wickets in kitty. 15 away from 18 balls. 176 for 6. 15 runs away. Mahjoor Sofi will bowl from Northern Pavilion and from Southern Pavilion, and he was expensive. And he was bowling up the hill. He's going to bowl from Northern Pavilion, and is he going to make the ball climb this time round? Earlier on he was taken on by Ram Dayal twice in an over. When he was trying to make the ball climb, he was trying to get it somewhere around that head high, but that was around that waist high, or just above the waist. 176 for 6 after 17 overs. In the meantime, Mahjoor Ali Sofi is getting ready.
On strike is going to be Rohan Cole. 15 away. Boundary riders almost ready, or in readiness. Dig out nicely. This could be tight, but he's unable to pick the ball up. Not a clean stop at mid-on. Look, the two batters scamper like this, but there was no run available. And look at the field. It's Umar Malik there. Look how he was trying to pick it up and smile from Rajouri. Sophie telling him, oh, you are tired. You are done. You don't have energy. He looks tired. There wasn't a single, and the two batters crossed over. Good running pinch, a single from nowhere. 14 away. 17 balls. Puneet is looking around. He's taking quick look of the field on either side. 14 more needed. What is this from Mahjoor Sophie? It's a big wide. It's a big wide. Down the leg side. Easy for umpire to judge it. They are now 13 behind. Mahjoor need one tight over here to take it to over number 19. Push it for the next over. Just 13 away. Man in front of Scaron Dion. Oh, that one. What was that? That's gone past wicketkeeper for a magnificent boundary. There was a pace behind it, but well directed by Puneet. Look, he just shown it away. He was trying to flick it. But it's come up that Q end. It goes straight down to the fine leg boundary for 4. Was trying to keep it wide up the fine leg, but it goes down towards that fine leg, while long leg area for 4. 9 needed into the single digits now. 9 away from 16 balls. It's their game to lose. Hillview losing first game, and here they are back. When they need 191, this side look totally different from other day. Guided nicely again, down to the backward of point area. Fielded as well. Imtiaz lefty. Look at that stop. He imbalanced. But he dragged the ball back into the play. He flicks it in. And gone past to the boundary cushion. Ball wasn't in contact there. A good stop. Save it. 3 runs for his team. Now they're 8 runs behind from 15 balls. 8 needed from 15. This is... Oh, that's a good stop, I think. Oh, could be close. We'll have to wait and watch. TV umpire is looking into it. He's there to introspect. He's there to investigate, and is watching this one clearly and closely, having a close look at it. And he gets away with that one. 8 away. Down the leg side, easy pickings. That's gone down to the fine leg boundary for 4, and that 4 brought to you by Just Bukhara. And with that 4, there is addition to the tally. Onto the pad line again. And Nazir, we're talking about that. He need to be disciplined there to take it and push it for the next over. But he's unable to put brakes on as he conceded a boundary there. As a captain, you would want a good performance from Rajouri Sophie and a powerful spell, but he's lacking there. And bowler like Mahjoor, unable to operate in his own style, conceding runs like this at the fag end. Who would have thought that? But captain was eyeing something special from his experienced lad. 4 रन दूर इस लक्ष्य से हिलव्यू राजौरी. वो कल कहानी समाप्त हुई थी हार पे, पर आज समाप्त होने जा रही है जीत के साथ. तो ये क्रिकेट की महानता, ये क्रिकेट की खूबसूरती. हिलव्यू राजौरी 3 रन दूर, 13 गेंदें बची है. 188 पे 6, 191 बनाने हैं. महजूर अली सोफी ये गेंद, और इस बार फिर ऑन साइड में गैप में गई है गेंद. पीछे फील्डर हैं, और जब तक वे गेंद को फील्ड करेंगे, दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन और लेने का. 189 पे 6, 2 रन चाहिए. 2 ओवर की गेंदबाजी शेष.
3 में 38 खर्चे मेहजूर अली सोफी ने काफ़ी खर्चीले साबित हुए। सिंगल विकेट उन्हें ज़रूर मिला है, एकमात्र विकेट मिला है, पर रोहन कौल ने 21, पुनीत कुमार 26 पे आज शुरुआत दी थी। सूर्यांश रैना ने वो कमाल की पारी खेली और उसके अलावा रामदयाल ने भी आज आक्रमण शुरुआत से ही किया, जिसके चलते वो 190 जो एक समय में लग रहा था कि आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं है, एक चुनौती जरूर होगी, पर उन चुनौतियों को स्वीकारा और आज कहानी जीत के साथ समाप्त होने जा रही है हिलव्यू राजौरी की। और ये पहली जीत होगी, 2 अंक जरूर मिलने जा रहे हैं यहाँ पर हिलव्यू क्रिकेट क्लब को। 189 पे 6, 12 गेंदें, 2 रनों की आवश्यकता। रोहन कौल और पुनीत कुमार, हालांकि पुनीत सामने और ऑन साइड में खेल करके एक सिंगल पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ रन संख्या 190, स्कोर्स आर लेवल। 190 पिछली पारी में बने और दूसरी पारी में 190। अब 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और सामने रोहन कौल, उमर मलिक की ये गेंद, यहां पर सिंगल पूरा कर लिया। ये कहानी जीत के साथ समाप्त हुई और 191 को चेज कर लिया 18.2 ओवर की गेंदबाजी में हिलव्यू राजौरी ने। और ऐसे में एक और मुकाबला जो इसके बाद प्रारंभ होगा, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का मुकाबला अथवा इंडिया 11 के साथ लेकर के लाइव एक्शन में आपके साथ जुड़ेंगे। दीजिएगा विदा, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।